अभी लाइव चल रहा है 1510 की स्क्रीन में। हायर हाई के बाद पहला लोअर हाई आया, ब्लैक कैंडल से डाउन किया, डन। 1510 में चेक करें ना, वही मेथड चला है अभी। हायर लो बना था ना, उसके बाद लोअर हाई बना। बट वो बीच में फिर वो दो ब्लैक कैंडल में तो बन गई थी। हाँ, लेकिन मोस्टली इसको नीचे उसने कुछ बनाया नहीं ना, कुछ भी। इट्स मीनिंग इट शुड गो डाउन। नहीं होता, नहीं होता। मुझे दो पूरे ब्लैक कैंडल से उसने दिए हैं 4 टिक्स। पहली ब्लैक कैंडल है कल हम वही डिस्कस कर रहे हैं। LL सेल LL सेल नहीं वो हमारी बात हुई थी कि वो सेल में भी डबल एल आता है और LL के बाद सेल करना होता है तो सेल में डबल एल आता है, तो दैट इज लॉजिक। हां से करीब रहना चाहिए। सही चीज है। All right.
Yeah, it has ability to take automatic trades. Yes, if you like. Make sure you guys watch Friday areas. Because Friday areas are updated. So 20,688, 20,512. Good morning. नहीं अभी तो देख रहे हैं कि R1 डन हुआ है मेरा। लेकिन जिस हिसाब से गिरी है आज तो एक्सट्रीम हाई भी मुझे दूर ही करीब ही लगता है। हाँ नहीं एक्सट्रीम हाई, लेकिन अगर गई तो मैंने R2 दूर से एक्सट्रीम तो थल्ले नहीं जाना सर 19,000 नजर आने लग गया। मैं ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 80 अगस्त शुरू ਕੀਤਾ 19,000 ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 21,385 ਜੁਲਾਈ ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 22,450 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। So 623 अभी तो 620 R1 is not technically done। अभी तो राइट नाइट सेशन जा रही है की तरफ। शाम को वो तो पूरी समय 100 पॉइंट गिर गई। कल शाम को ये 100 पॉइंट गिर गई। ये टोटल या होपफुली अब हो गया हो, मीनिंग के नहीं मुझे अभी लगता है 20,400 की फीलिंग है बकायदा। आज कौन खेल रहा है क्रिकेट? अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 109 में गए 12 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, जीत गई। इसने 25 ओवर मैच कर देना चाहिए। एक मिनट गया 274 के लगा रहे थे 12:30। अभी तो मैच भी आज नहीं पता। 12:30 ओवर में 6 मार गए। कौन? ऑस्ट्रेलिया। टारगेट ऊपर से बोल इन्होंने 25-30 ओवर मैच कर देना। जो जीते हैं सेमीफाइनल। तो अफगानिस्तान के चांसेस है क्या? हाँ नहीं वैसे चांसेस है या नहीं, लेकिन अगर जीत लिया तो सेमीफाइनल में। नहीं मैं वो मारे हैं और इसको आपने क्या देखना है? 30 से बैक मार देंगे ये हो गया। और मैंने क्या दिखा पा रहा हूं ये मान लीजिए तो मेरे कितने आ रहे हैं। ये रिमेनिंग जो अदर रीजन का ये क्या है? डेज रिमेनिंग वो पीछे जितने दिन रह गए हैं उसको 7 दिन से पहले नहीं कर सकते ना। लेकिन उनका डैशबोर्ड नहीं सही चल। कभी आपने ये मैंने हाँ तो बस सर जी तो फूड में कितनी नहीं करेंगे। हाँ देख लो
लॉगिन करना पड़ेगा उसके अंदर में ये खोलना है उसके अंदर में इसका आपको सब्स्टिट्यूशन क्लियर हुई ये शाम को 6 बजे अपडेट करते हैं उसका गाइड थ्रेशोल्ड तो जितना आप बनाते हो उतना शो नहीं होता उसमें से ये काटता है आपने 100 बराबर देखा और 75 लिया इसलिए तो जो आज है वो वही असली है हाँ रिद्विक तो उसका बोलना उसका भी मेरा बोलते हो इंडेक्स हाँ सब तो लिक्विडेट सब कैंसिल लिक्विडेट तो बहुत हां कैंसिल तो अच्छा इसी से ना तार पुश कर देना बस अब दो ना अदरवाइज बढ़ जाएगी 20 मिनट का दैट्स व्हाट आई नो वी आर रॉन्ग अकाउंट लिक्विडेट कैंसिल करने है तेरे वाली कंपनी में लेकिन नहीं तो रिन्यू नहीं करानी बात तो ठीक है लेजर का लॉगिन करो अकाउंट पे जाके वो कैंसिल करो All right, good morning, everybody. Friday, February 28th. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Welcome. And let's look at the news first. At 8:30, we had core PCE, and it's very close to forecast, so nothing major. Trade balance, personal income. So we have news at 9:45 a.m. So today is the last Friday of the month, and then we roll into March. So let's look at Nasdaq night highs. Your night high is 688. Your night lows are 515. So these are the two numbers for night highs and lows. So lately the swing was last night 173 points. ES, we have highs as in high 5900, low 5858. So let's see which way now we are going to go. So areas are updated. Make sure you guys do Friday areas. Now they're all updated on the thing and the charts and everything. I believe low to high will work. It's fine. Pressure is ऊपर का बन रहा है सारा का. So low to high, expected low to high. No voice on Zoom. Why? What's going on? No voice. Okay, so Zoom should be okay now. It's good. So Zoom try now. Everything should be okay. So let me just repeat quickly what I said for Zoom. So Friday, February 28, 9:09 a.m. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Welcome to the website. Live stream is on YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, and LinkedIn. Everything is good. Let's just Zoom is good, TikTok is good. So
The way selling has been happening has just been too crazy, right? So let's see which way the direction goes. We will go with the trend or the areas. We don't care market goes up or down, but it has fallen quite a bit. So sorry, the way. I don't think we close your charts. 1 second. It expired on 28. Let me double check. 1 second. Let me check. UK. Yeah, 326. Let me double check. Market is still, trend is down. Okay, I'm going to start a new ritual today. You guys will hopefully like it. So before we start trading, we're going to all stand up and repeat something on the board. Okay, please. So just work with me in this because it's critical that we do this. So all of us, since you're already standing, we can just repeat this. If you guys can quickly stand just to kind of understand what I'm about to say. That way it manifests in your brain these 4 points. So we're all going to repeat this, that trading is a serious business and I'm not here for gambling, number 1. So I bear witness to myself. You guys can read that. So I bear witness to myself. I will always check the news. I will always place my stop losses. I will follow my strategy and not trade randomly. I will treat today as my first trading day. And I will stay disciplined. Okay, so we're going to do this every morning for about
10 seconds just to get your brain, focused on these things. So that's your pledge. Yeah, exactly. So again, it's a serious business. So just at 9:15. So that way, the idea, it just reinforces this in your mind that, hey, in the morning, मैंने कसम खाई है, अपने से कसम खाई है कि हम ऐसे करेंगे. So there's not a single trade you will do without a stop loss. Yes. There's nothing you will do without, like if you want to do mid-band, you want to do higher highs, higher lows, area. So just remember this. I'll post this on Super Area's website. So we're going to do this every morning. So have a seat. No problem. No problem. Absolutely. So we'll get this going. Okay, any dusty? I think every trader should do this every morning. I know Daniel has 4 trade maximum a day written for the last 20 years. 4 trades a day, no more than 4. So FTMO is 20,400. We're waiting for that. 1084. 1084. 166. Yeah. 049. Yeah. No problem. Yeah, S3 would be a good buy if you want to. The way market, at least since last Wednesday, has been dropping, goes to S3 very fast. So. And I think every influencer out there will start this mandate of a pledge. कुछ 4.75 तो 5 कर ले. हाँ तो 5. So अच्छा सर, आप ये 30-20 में ये लोअर हाई से एक सेकंड, हायर लो बनाया फिर लोअर हाई बनाया. हाँ एक सेकंड. अब ये पहली डायरेक्शन है कि नीचे जा सकता है. यहाँ से ये यहाँ से हम 8.75 पे सेल कर सकते हैं. ब्लैक कैंडल के बाद, ब्लैक कैंडल all done. So for 10 minutes it will show. आपने जो ये जो लो हाई है ना 5892.5 So how much? So 165 they're charging? Or? No, $33. 33 at the bottom. 33. Yeah. हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Lower high lower. हाँ जी, इसमें से माइनस इसमें जो माइनस करेंगे शॉर्ट करें. हाँ शॉर्ट करेंगे माइनस करो 8.75 5883.75. यहाँ पे आपने ना सेल स्टॉप पेमेंट अगर ये वैल्यू रहा अदरवाइज ऊपर चला गया तो काफी जगह है. हाँ जी हाँ जी. आप 10-15 पे लगा रहे हैं. ऑटो से पंजे लगा रहे हैं. तो मैंने फॉलो इसको कोई ऑटो में निकल जा रही 588 सेल में लगाएंगे. शॉर्ट
शॉर्ट टाइम जब माइनस कर रहे हो ना, जब माइनस कर रहे हो तो शॉर्ट करना, जब 8.75 माइनस नीचे कर आ रहे रहे हो तो शॉर्ट करना। ऊपर जाने की बात करना तो सिंपल रोशन रोज आनी है, हो गया सारी मेरे ख्याल है एक शायद हल्की सी है, ज्यादा बड़ी कोई बैग तो है कोई नहीं लोग ना? अपना अच्छी की नहीं? ज्यादा बनना सेम न्यूट्रल। लेनी है। हाँ, ये चीज़। क्योंकि सामने अपने लेवल है से है आइडिया आई हां फिर लोअर है तो कुछ कंट्रोल बैठे शायद दैट्स व्हाट दैट मींस स्ट्रेटजी है यहाँ पे ब्लैक कैंडल कंफर्म हो जाएगी इसकी 30 अच्छा इधर हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? ये तो मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी ये ट्रेडिंग का मैंने उसके बाद इसका ऑलरेडी बना नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ वो ये जब लगेगा ना जब पिक होगा तो ये हो जाएगा ओके। लेकिन अगर बात नहीं जब तक हमारा को यहाँ पर वाई लगा तो मैं लगूंगा यहाँ पर और अगर इस स्टॉप मैं ऑलरेडी लेकिन स्ट्रेटजी बता भी सकता हूँ वो आपने इसका ऊपर बनाएंगे वो जब ये दिख जाएगा ना उसके बाद में लगेगा No, we don't check the background color. Not this is not a background color. Right, that's a black candle. Right. हाँ चलो मैं काम करता हूँ ये नहीं मुझे पता थोड़ा क्या बात बनाती है बट मैंने चलो बना लेता हूँ चले आया कि नहीं? ब्लैक एंड कौन हुई कि नहीं अभी नहीं तो 30 वो हो जाएगी ना जब एक वीक में ना तो होने वाली है अभी 5892. नहीं? 583.7. Yeah. So there is a sell trade based on 3020 5892.50 minus 8.5. That's where your sell would start based on the एक टिक एक्स्ट्रा दे एक tick extra दीजिए तो दे दें. Because after higher high, higher low, that's the first lower high. So that's your thing. Hey, I'm not going up again. Are you doing 1510 or? No, 3020. This one is on 3020. But we can do the same on 1510 with different numbers. Correct. So 5. So that number is slightly different. Yes, tomorrow there is a presentation at 1 p.m. Trinity office. First 90 minutes are sales and marketing. So after technical discussion will start after 3 o'clock. So you're saying to sell at one number, I'm sorry. So the way the math would work is 5892.50 minus 8.5. That's where the black candle will form. Correct. That's called the sell stop because that would happen in sell stop. Minus 8.5. नंबर पे 5891.75 है क्या मेरा रिकॉर्ड बोलो मैं एमएस का नंबर बोल रहा हूँ मैं सॉरी एमएस तो जो भी आपका नंबर आएगा उसमें से yeah so wherever that number is of the lower high on 3020 So you're saying that's where the black candle. that's where the black candle will form.
मैं तो मार्केट में कर रहा हूँ। So whole night there wasn't really much of a move. So हाँ यहाँ ऊपर जाके change करना है। बाद में करना है अभी। the market is about to open. Let it establish trend. So give it after 9:30. I want to see which way the market is going to go, because that at 9:30 it could rapidly change. So because base is down, so there you go. Black candle did form. I wouldn't wait for it. After 9:30, let it establish something. How many ticks it gave you? 2 or 3? 1, 2, 3. I'm just. It's just right now -25. नहीं आप लोग की एंट्री क्या थी? 833575. Okay. हाँ बिल्कुल. It's 5 more minutes, then we'll figure out which way the market wants to go. एटीएम खुल गया हाँ जी, मैं वॉशिंग मशीन हाँ जी, अगर आपका स्टॉप लॉस और you don't have to ask me for वो पाकिस्तान में स्कूल में पूछना होता ना वॉशरूम. So 3 more minutes. Let's see which way the market wants to. Will it go and test night session low or high? कोशिश करेंगे इस टाइम पे ना बताएं. I mean 9:30 खुलते ही कुछ होता है ना, तो अभी तो R1 से आ रही है. Let's see. So far the theory is working. Yeah. So far. Only 251. It's okay. There you go. It filled up. Perfect. 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 So theory is working 100%. Yes, sir. थ्योरी चलती है जी. हमने एक सेटअप लिया उसका, तो हो गया जी. Congratulations. I should always go to the washroom. No. So that's not the part of the things we wrote, Rajram. We wrote stop loss and हाँ वो भी आ गया. ठीक है. It's okay. कुछ भी नहीं हुआ. It's okay. हाँ क्योंकि आपने इमोशंस नहीं इन्वॉल्व थे ना, कंप्यूटर इन्वॉल्व. I'm still इन इट, राइट. ठीक है. लेकिन एटलीस्ट कितने 3 पॉइंट हो गए? नहीं अभी 4 पॉइंट शो कर रहा है, लेकिन मैं माइक्रो में खेल रहा हूँ. ठीक है वो नो प्रॉब्लम. सिर्फ हमने थ्योरी टेस्ट करनी थी, राइट. हाँ मैं थ्योरी टेस्ट कर रहा हूँ. ये ज़्यादा फेल हो जाएगा तो मैं अपने ना उस पे आया हूँ. It's a stop sell, not a stop. So it's called this. So the price was stop sell limit. सर 9:30 होने दो, क्योंकि एकदम उसने खुल के ना पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना है. So because remember the low of the night has been 58.58. Our value area is quite high up there.
So the chances are it should go back up, but let's see. Because of the mathematicals, your first mid-band worked though. Because the way math worked, though both were lower low and 15-10 mid-band. I put sell stop limit. It should have picked up because the black candle formed and would have taken. Let's see. I still think it should go and break below 58. There you go. Congratulations. The price came from R1 and market is officially open. Let's see. 30-20 mid band is good, sir. ठीक है, कुछ गलत नहीं नजर आ रहा मुझे. अभी तो सेकंड मिड बैंड 15-10 का पास हो गया. Still, I think 7th day in a row, things are. If I didn't bring my life first, then I could make easily. मेरा भी जो ट्रेल होता है ना वो होता है. ठीक है, तो आपका जो ऑटो ट्रेल का टॉप ऑफ द बार. हाँ हाँ, बस ठीक है. चो देखो 3.2 है. 3.2 हाँ हाँ, ठीक. मैथ सही हो आपका तो अभी आप वेट करें. ऊपर जाना है, हमने जाना ही नहीं है जब तक पहला लगेगा नहीं. Let it break 58.58. That's what my key is to watch. 58.58 below S1 because that will create a divergence. So prices has to go and break 58.58. There you go, another mid-band worked 15.10 going down. One mid-band at 9.29. Second one kind of missed, but this is the third one. So we are almost getting inside S1 very quickly. Another mid-band going down. Both charts are same, synced 100%. Yeah. Guys, get ready for the FTMO is coming, which is 20,000 range. So market is in S1 now. Let's see if it goes and makes a divergence on 60 minutes. It's got to go and break S2. 58.50. It has to show in trade of it, right? Sorry? It has to show. Yeah. Just refresh first and then do a connect, disconnect on Ninja. Oh. But if it works on TradeAway, then you're done. I'm not in any trade whatsoever right now. P-fall.
Yeah, still free fall. No upside yet. So do we wait for the upside? Yeah, we gotta wait for the first. S2 sir is a good system. S2 should be okay. Should be okay. We'll figure it out. S2 5845 हाँ जी ऊपर वाला 548 है और नीचे वाला 5 Wait, let it test midband first because this was a swing. This is a retrace. Let's see if it goes to Fibonacci sequence first. The red one, red box, red and yellow. Let it take the full retrace. What is the reason we don't touch the retrace? No, we do touch, but right now it's because the swing was 34 points, right? The big swing was 35 points. This is a retrace of this. So it should be like a bigger. Yeah, so the moment it makes the first, give me a second. I'm not taking a buy trade yet. Not yet. Let it do a first higher low. I need to wait for the first higher low in order to go long first, not going long first. Okay. There you go. It's getting into the retrace. So it's almost inside the Fibonacci boxes. Let's see if it takes a retrace from here. So it's inside, very close inside there, the red box. There you go. So retrace is coming from the boxes. Good, excellent. Keep coming down, keep coming down. I took, no, wait. Now, yeah, let it make a, yeah, now we have a first higher low. 1 second. First higher low, we got it. We got on 30-20, first higher low. नहीं बाय हायर लो के बाद बनेगा ना हायर लो से ऐड करें 8.5 पॉइंट्स वो आपका स्विंग बनेगा ना क्योंकि अब आपकी ब्लैक कैंडल बन लेने थे ना Yeah, it takes a little bit time. And try connecting hotspot, please. Okay, so yeah. ये buy stop भी बनेगा ना Buy stop बनेगा Swing retrace extension अभी extension बनने की कोशिश हो रही है वेटकर So I took the Fibonacci box trade though बॉक्स के अंदर से सेल कर दिया था ना क्योंकि जो रिट्रेस आई उसकी रिट्रेस फिबोनाची तक गई उस वहां से मैंने सेल कर लिया wait not yet no buying yet guys no buying yet इसीलिए वो मिड बैंड नहीं लेना था क्योंकि उसकी अभी एक्सटेंशन चल रही है अभी ना 1510 में मिड बैंड नहीं था ये it's trying to get extension on it 30-20 swing retrace extension right now let's see if it makes a black candle let's see not yet whether it's an extension to the downside or a black candle to the upside so after this higher low I'm waiting on 30-20 a black candle to the upside that's what my cue is
Black candle to the upside is my cue to enter long. Nothing yet. एक पॉइंट और नीचे आ गया आने दें. So अपना So I don't have a cue to go upside yet. ओके we shouldn't play नहीं अभी क्यू बनी नहीं ना. मैं बाई स्टॉप ही बनेगा, लेकिन पहले उसको ब्लैक कैंडल तो बन लेने दे अपसाइड की. अभी तो स्विंग आई है, रीट्रेस, ये उसकी एक्सटेंशन चल रही है. अगर एक्सटेंशन ना हुई तो ब्लैक कैंडल अपसाइड चाहिए मुझे. 30 देखे ना, अभी कोई बाय नहीं है, कोई बाय नहीं बन रही, कोई बाय नहीं है. अब यहां से 70 से 9 ऐड हो जाएंगे आपके. यहाँ से बाय बनता है नहीं यहाँ से नहीं 70 से ऐड करें 10, 80, एक माइनस करें 79, और फिर एक टिक और माइनस कर दें तो 78. लेकिन ये 70 का फिगर इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये जो 70 का, ये 70 से नीचे गिरता जाता है तो फिर आपका वो बाय स्टॉप चेंज होता रहेगा. मुझे ब्लैक कैंडल टू द अपसाइड चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं बाय कर रहा. मेरा सेटअप ये है. No black candle to the upside. But this is still a no extension yet. अभी जा रही है नीचे, क्योंकि ये आपकी, इसको मैं लगा देता हूँ ये इस पे. या so swing, retrace, अब extension बन नहीं रही, right? So this is my clue that I should go back up. So take this number 5870 and add your black candle formula to the upside. No, not yet. आने दे. इसीलिए बाय नहीं बनता. There is a reason to not buy. If it makes a lower low, then start selling. हाँ, अगर lower low बना, अभी तक तो नहीं बना जी बाय. There's no buy whatsoever until I have a black candle. So 68 plus 10, 78 minus 1, 77. अभी नहीं बना जी. हो गया जी, पिक हो गया, मेरा ट्रेड हो गया, जा रहा है. Oh, it fell down. Let's see. I hope it doesn't take a stop loss. I saw a bit of a profit. Let's see. You should shoot to the upside now. There you go. Everybody's in profit. ठीक है जी, अपना आप देख लें कहाँ पर आपने निकलना है. डन हो गया जी. I'm done. Very nice. Excellent trade जी. Excellent trade. Done. It has to make sense. ठीक है, everybody's okay. दो उधर से 6 मिले, 8 मिले, सेटअप के साथ जाना. Wait. So wait, I'm guiding you. Wait. अभी बाइंग नहीं करनी. वेट कर. अब बाइंग शुरू कर दें मिड बैंड से, क्योंकि अब वो बाइंग शुरू हो गई है. नेट जस्ट ब्लास्ट. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर डन. अगर एक ही वो अच्छा आपका ट्रेड मिला, वो ले गया आपको ऊपर. अभी इसने हायर हाई दोनों साइड पे आना शुरू हो गया है, राइट? सो होपफुली एवरीबody is done their target by now 9:43. I am personally done, so I'm not taking any more. That's my second trade. आराम से अब अगला सेटअप बनेंगे, फिर देखेंगे तारे फिर अलाइन होंगे, फिर देखेंगे. ठीक है. मैं आपको ना वेबसाइट देता हूँ जहाँ से ना खुद भी हो जाता है अपडेट. मैं बता दूँ. नो प्रॉब्लम. हाँ जी, सब कुछ ठीक है. दोनों ग्रीन है, सब कुछ ठीक है. अपना स्टॉप लॉस लगाएं. नाउ दीज मिड बैंड्स शुड बी सेफ एनफ.
Yeah, because both are green, both are higher highs, everything is fine. So we are gonna go up along with the trend. Remember, one is higher high, that one is higher high. Both are green, large triggers are open. We are now going and buying. So 2 setups I gave you already. $30.20 mid-band, let's see. A second, shouldn't fail. Let's see, hopefully no stop loss hit. $30.20. Oh, it changed color too fast, too much. 30.20 is still trying to struggle. To the upside. 30.20 mid-band, will it work? Or will it give me a stop loss? I'm in from 30.20 mid-band. Everything is higher high, so it should take me up. No, my mid-band got stop loss hit on 30.20 mid-band. How much 8 ticks normally stop loss? नहीं मैं ले नहीं ना, मैं जरा ज़्यादा लेने से ना. So, retrace for what are we trading? We're trading futures. All right, falling down, Nasdaq crazily. Still, we have no signal to go down yet. We still have no signal to go down because it's still doing a retrace. Swing के बाद retrace आ रहा है. No signal to go down. एक्सटेंशन आएगी तो पहले लो वो बनाएगा ना एक. अभी कोई swing नहीं है. ये कनेक्शन नहीं बन रहा ना. वो आपको अभी चैट करना शुरू करें उनसे कि आपने इतनी देर हो गया पे किया है तो क्यों नहीं आ रहा. एक से और चैट किस थ्रू करना है? आपका ट्रेडर वेट का है. तो लेजेंड्स की वेबसाइट को खोलिएगा. So Fibonacci boxes retracement worked. That's your first clue though. Lower high लगा है. Lower high. हाँ जो I'm done my trade, so I'm not trading right now. So सेल बनेगा क्योंकि आपका लोअर हाई लगा है. तो sell at what? 5 or 7 6.25. 33. Yeah, this was active. 5 से मत
587625. No, 5885. Minus. Yeah. Okay, just right. I just bought a brand new account. This is my number. It's not showing up on TradeAway. We'll just do this. And just write. They will fix it in 5 minutes. Just say I just purchased a brand new account. It's not showing up on TradeAway. आप ब्लैक कैंडल ली एंटर हुए हो गए ठीक है नहीं माइनस कैसे गया सेल स्टॉप था ना हाँ हाँ ठीक है ब्लैक कैंडल नीचे बने तो आपका लेकिन आपको उसने 4 टिक्स देने चाहिए 4 नीचे ग्रीन फिबोनाची बन गया Now the swings are getting slightly smaller. Okay. This hit my stop loss. Because now the swings are completely getting consolidations. छोटी से छोटी बनती जा रही है. Swing retrace, no extension. Swing retrace. So again, let it formulate some swing first. Let's see. It's consolidations. Still too fast of this whole like 30-20s. That's why I couldn't make that last 30-20. Otherwise, I took it. Fast, so fast. End of the day उसकी है ना नहीं live trailing. No, I mean Sales. Yes, correct. सारों की आज आखिरी दिन है. Legend, Bullnox, Apex. I'm not taking any trade whatsoever, waiting for the next proper setup. So let's see. Nasdaq is kind of stuck between R1 and S1. For example, today ES came to 5857. Mm-hmm. There is any like 1 second. So it made a divergence. So last night lows was 5858. 58? 58. Okay.
right now the morning low was 5857. So it went and tested last night, and then it went back up, right? So It means, like they do test the. So today, what was the thing? So for up, base was down, pressure was up, right? So base was down, meaning it should go and test night session low, right? So it did touch night session low and came. maybe with the micros we can. Yeah. So the thing is, some users, but that's a 9:30 trade though, right? The moment 9:30 happen, that has nothing to do with colors or anything. So every trade is different. Right now it's in consolidation. The swings are too small. I'm not taking any trade whatsoever. Swings are like at least from 948 to 955, the price is only moving 10 up, 10 down, 10 up, 10 down. But both charts are synced now to downside. Both are making a lower low. Let's see which way Nasdaq wants to go. Nvidia after effects. Remember, since last Wednesday, market has fallen 2,000 points. It's every time Trump comes, this is normal, by the way. Like, if someone have taken 5857 trade, yes. if just one trade gave them maybe 20. नहीं पहले तो हमारा 9 वाला ट्रेड पूरा नीचे गया ना, वो जो लो पहले वो स्पीड से गया, फिर दूसरा ऊपर गया तो मेरे स्टॉप लॉस को हिट करके देन नो ओके आपने स्टॉप लॉस थोड़ा देखिए स्टॉप लॉस को नहीं वो उसको ब्लैक कैंडल का स्टॉप लॉस अगली ब्लैक कैंडल होता है रिमेंबर तो आपने अपने आप को 9 पॉइंट देने हैं मीनिंग कि ब्लैक कैंडल का अगला स्टॉप लॉस क्या है अगला ब्लैक कैंडल राइट तो ब्लैक कैंडल को 9 पॉइंट तो देना और या माइक्रोस करने हैं तो और थोड़ा कम क्योंकि जब तक अगली ब्लैक कैंडल नहीं आएगी आप ट्रेड में रह सकते हैं so because when we are doing a black candle to black candle trade that means if you bought it here right until it gets a new black candle you have to stay in the trade so this is a otherwise I could have taken 60 points. Yes. So far, this mid-band is working both because both charts are in sync. You don't trust, so time for you to get blocked. Yes. Pressure is up, so I want to go ahead and zero followers, Ali 28089. Brand new account. Any reply yet? Not yet. Just hang on. जी सर वालेकुम जी जी हाँ जी हाँ जी बताएं एनी डस्ट नंबर दें ओके नो प्रॉब्लम नहीं लेकिन फिर दूर लगाया होगा ना अब वेरी गुड अब मैं तो ये तक
चलो मेरा अच्छा वाला मान बिल्कुल सही। चलें दे एनी डेस्क दें मुझे मुझे व्हाट्सएप करें एनी डेस्क। ओके नहीं मुझे, मैं कह रहा हूँ मैं कंप्यूटर से करता हूँ ना, मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना एनी डेस्क नंबर। हाँ दे दें। नंबर दें। हाँ जी स्टेशन 136-035। ओके मैं अभी करता हूँ, 5 मिनट दें। ओके मैं करता हूँ। We're using for futures trading. your number, right? Yeah 069. I couldn't see your status. Sometimes No WhatsApp me so I can save you as your I number. send you. Okay. Good morning, sir. Good morning. I just couldn't again. Okay. See, let me add now. Now you will see. Oh, okay, thank you. Good morning. The pledge was very good today. Just trying to make sure that everybody follows. I gotta add one more line. Do what you see, don't do what you think. Like I will do what I see. I just gotta add that one line to it. वो तो लगे 2 सेटअप्स का वेट किया, दोनों ने पैसे दिए। अभी तक तो ठीक है 20 पॉइंट, क्योंकि R1 टेस्ट हो चुका है? R1 तो सुबह ही हो गया था जी। इस वाले में No. Too fat. बहुत मूव हो रही है तेज। 30-20 mid band did not respect. Let's see Fibonacci. It works from this higher low back to S1. नहीं मैंने उस बॉक्स या मैंने ग्रीन बॉक्स के नीचे से लिया था 4 टिक्स के लिए। या ग्रीन बॉक्स के नीचे लिया, डन। यस सो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट ले ली, मिड बैंड नहीं लिया था। सो जिस
जिस स्पीड से जा रही है ना मार्केट, मिड बैंड नहीं चेस हो रहा, लेकिन फिबोनाची की रिट्रेसमेंट चल रही है। अभी वो ग्रीन बॉक्स के बॉटम से लिया, 4 टिक्स लिए, डन फॉर द डे। way too fast. So it made a lower high. Yeah. But it made a lower high. You can calculate 30-20s. It is again way too fast right now. It's because Nasdaq is just hammering everything up or down. Consolidation, don't take any trade. कंसोलिडेशन, बहुत छोटी छोटी ब्लैक कैंडल बन रही हैं। Should be. Let's see. 9:45. There was news. So Chicago PMI is higher than forecast. So should go up technically. सर चेक करें कार्ड में कोई अलर्ट तो नहीं आया वो, क्योंकि अभी वो टाइम लग रहा है। हाँ तो बैलेंस का तो मसला नहीं है ना। ठीक है, अभी जैसे ही होता है मैं ये हो गया। ठीक है, थैंक यू। ओके, मैं करता हूँ। ओके।
Yes, we're still trading March contract. बेसिक क्वेश्चन 15 12 15 10 कितना उसका दिखाते हैं क्या? 10 ticks. टाइम फ्रेम Sorry, time frame नहीं है. These are based on ticks. From price A to price B, number of ticks. So these two charts are not time based. They're always based on ticks. So ideal situation is both are green, both are higher high, coming to mid band, you buy. Both are lower low, coming to mid band, you sell. So this is 10 ticks and this is No, one is the 10 ticks, this is 20 ticks. So so far I took 3 trades, 2 of the higher high, lower lows, 1 mid band 30-20, which hit my stop loss. So far still up. So waiting for the price to hit. Pressure is up, so let's see. Hopefully the down is done. Hopefully. 7th day today. So since last Wednesday we are. Oh, good for Tesla, man. Elon is coming in. So they're doing a retaliation, I think, in my opinion. Because Tesla fanboys were thinking it was going to go to like $700, right? So it's okay. I don't, but with a normal growth. 213 to 250 made sense. 213 to 484 doesn't make sense, right? So 484 was the. It touched R1 one more time. Now let's see if it's a mid-band trade. $30-20 mid-band work this time. Pick नहीं हुआ जी? No. Going down. Maybe fib, it will retrace from 58.82. The fib boxes at the bottom. Let's see where it retraces from. Still hasn't hit stop loss yet. Still hasn't hit stop. Yes. मिड बैंड से डर लगे फिबोनाची ले लो, नीचे वाले डब्बे 2 और भी खड़े हैं ना, तो फिबोनाची ले लो। 4 टिक्स के लिए फिबोनाची, 4 टिक्स का लॉस, स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का रखें फिबोनाची, लेकिन ग्रीन से नीचे, ग्रीन से। अभी तक मिड बैंड फेल नहीं हुआ आपका मिड बैंड। अब आप कहेंगे यार अच्छा हुआ लगा रह गया, राइट? तो अभी कहते हैं अच्छा हुआ मिस हो गया, लेकिन एक परसेप्शन कितनी जल्दी चेंज हो जाती है कि वही मिड बैंड बुरा लगने लगता है, वही अच्छा लगता है कि यार ब्यूटीफुल नहीं था मैंने मिड बैंड लिया। नहीं यार, अपने लॉस की स्ट्रेस लें, प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लॉस मुझे पता है कि नीचे लगा हुआ है, मिड पूरे मिड बैंड से आपको दे गया ये, ब्यूटीफुल। तो एक रेड नहीं कलर हुआ तो फिर आपको सब 4 क्लासेस का फायदा क्या हुआ अगर आपने अपना ही करना है तो। नहीं स्टॉप लॉस तो कहाँ से, मिड बैंड का स्टॉप लॉस 6 पॉइंट पे होता है। थोड़ा जल्दी देखें, उसका रूल भी तो फिर पूरा रखें ना, और वो लेकिन ले गई आपको प्राइस। हाँ, पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस मिड बैंड बनेगा, दूसरा फिबोनाची बॉक्सेस बनेंगे, तीसरे आपके एरियाज बनेंगे। आज तो वैल्यू एरियाज में घुस जाए तो मजा आ जाएगा। 5938 की तरफ है जी, बहुत ऊपर है।
बार एक टिक बताता है, हाँ कई बार एक टिक बताता है। हुआ ही करें 10 ticks trade को इजी पता क्या हुआ आज बड़ा जो है वो खत्म हो गया। उन्होंने ट्रेड लगा के ना बाहर चली गई, वापस आई प्रॉफिट में था क्योंकि इमोशंस नहीं इन्वॉल्व हुए, स्टॉप लॉस भी लगा हुआ था, टीपी भी लगा हुआ, ट्रेड लगाएं बाहर चले उसको देख। या मैं ऑनेस्टली अर्ली एजेस में ना सिम फॉरेन सिम पे चला जाता था ट्रेड लगा के, वो नजर नहीं ना आ रहा रेड ग्रीन तो दिमाग तो आपने आज हमारा पहला प्लेज मिस किया, आज so starting today at 9:15 everybody will repeat the pledge. Oh, everybody will stand up for 10 seconds and read this out loud. There's no if or buts about it, right? So I called it pledge. Myself, yourself, not. Today, I will always check news. I will always pay my stop. I will follow my strategy and not trade randomly. I will treat today as my first trading day. I will stay disciplined. I will do what I see and not what I think. Think so, yeah. Yeah. So this is the manifestation for everybody every day. All right. So still it's a swing. And I will not go for a round figure. No. That's a That's a message. $25 कमा दिया, 800 से उड़ गया आते हैं। बहुत स्पीड से मूव हो रही है जी, बहुत। Why $25? You want to leave everything. आज तो ईएस नैस्डैक बनी हुई है जो पिछले 5 दिनों से यही हाल है जी। यार 10:30 से पहले और सर ये 5900 से बिल्कुल हिट करके दोबारा हाँ वही R1 को टच किया और वापस आई है। तो ये एरिया भी एरिया इस वक्त इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बन रहा है। strong बन रहे हैं। Why it's strong? Because magic man mid band is sitting there. Yeah. So let's see. And we are getting very good like quick like profits here. भाई ऐसा नहीं है कुछ किया। Yes. quicker होता है। On 60-minute, we now have Fibonacci boxes. If anybody's watching 60-minute chart, they're starting to appear in Nasdaq I should say, not for. So Nasdaq is expected to go around at least expected high. So today it could go to expected high. Let's see. So for Nasdaq, please don't do R2. So expected high would be a better number for Nasdaq for today. Swings are ट्रम्प का स्पीच था सुबह। अभी यूक्रेन के से मिल रहा है ना। So Afghanistan did 273, Australia 109. Rain delay. कितना चार्ट बना दो ट्रम्प चार्ट। Sorry?
Make one chart like Trump chart also. Yeah. Lower low mid band. डाइवर्जेंस है वो देखें 30-20 पे डाइवर्जेंस है वो प्राइस नीचे गई है स्ट्रेंथ नीचे नहीं गई I need a first higher low to go up. Higher low, yes, to go up. So in the downtrend, I need the first higher low. Let's see if it makes a divergence line at a black candle. Yeah, divergence passed. इसलिए ये मिड बैंड सेफ नहीं था because of divergence. Your focus is very good, you know. So Practice just looking at strength. Hey, it made a mid band, came down, made a lower low. Now both are in higher highs. Let's see if it breaks R1 or not. So my order is 5889. That's the mid band of 3020. Dono same hai. So this is where my mid band is. If I change color, I'll get out. 2 micros I'm taking on per dia capital. Moving my buy limit to 5891. 2 micros per dia capital MES. Let's see if this is strong enough resistance. Third attempt to break. If it picks me and breaks, that would be great. So R1 is being tested third time now. Yeah. So let's see if it takes my order. 5891. Right? Yes, that's where I'm 589150 now. So it's above. So now I've taken it 5894. That's the mid band of 3020. It's getting overbought though. It's okay. I think if it tried to this time break R1, which it broke, let's see.
shooting up slightly. So if it goes more higher, maybe R2, then I'll sell from R2 and see. R2 is very close now. It's only 10 points, give or take. It's heading towards R2. Take me in and then go to R2, please. Then that would be nice. Yeah, directly into R2. No, I took my mid-band trade off, by the way. Okay. Now the swing has gone a little too crazy, like 25 points. So, and knowing my luck, now I'll touch mid-band, go to R2, then come down. Let's see. R2 15 times है? नहीं R2 तो नंबर पे है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिधर मर्जी ले 30 मिनट पे R2 का ताल्लुक कोई नहीं। तो मैंने 5916 पे सेलिंग का ऑर्डर लगाया है। ठीक है, let's see what happens from there. So I moved my mid-band order to R2. So instead of buy limit, I went to sell limit. कि मैंने उसको वो नीचे वाला कैंसिल 2 माइक्रो से मैंने रखा हुआ है। How did you arrive at this number? 596. सर वो कंप्यूटर ने दिया हुआ है ना एरियाज। No. हाँ Okay. 5913 से 16 तक हमारा R2 बन रहा है ना। कौन सा नीचे वाला नंबर अच्छा है या ऊपर वाला? नंबर नीचे पूरा रहा है twice now. यहाँ पे अब मेरे बनाया दोबारा से। सांस ले रही है यार, कहाँ से नहीं चल रही, ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब ये मार्केट खराब नहीं हो गया, लेकिन लेता ही रहा अंदर ही, छोड़ेगा छोड़ना, हमारी रुकी होती है और ये सांस ही रहती है। तो आपकी सांस क्यों रुकेगी? आप भी छोड़ो, स्टॉप लॉस इज योर रिलीज, सम ब्रेथ, Straight to R2. Let's see. सर मैंने 2 माइक्रो 13 पे लगाए। 13 पे मैंने 16 पे लगाया। ठीक है, एक्सपेक्टेड हाई से ज्यादा नंबर बनेंगे, लेकिन R2 और एक्सपेक्टेड हाई में फर्क अभी काफी है। इसको मैं दरम्यान में कर दूं कैसे? नहीं ये अब आप ये किस अब यहाँ से किस्मत का काम। Still nothing? No. They're replying to you? Yeah, sounds good. I'll be. Normally that is quickly, right? Yeah, it's very fast. I think a number of people are signing up, maybe. This is futures market. This is not gold spot or EFT or cash. This is futures gold. ट्रॉफी आ जाए पाकिस्तान से जीत रहे हैं, पाकिस्तान कहता है ट्रॉफी आ जाए इंडिया से वो मंजूर है। ये जो एरिया इसमें जो है हमारा जो कहाँ पे आ रहा है, नहीं सॉरी जो कुछ प्राइस आ नहीं मैं होस्टेड से मैं होस्ट
I was wondering. I'm logged in. वो मुश्किल होता है actually इसको Windows पे ना मुझे. You need Windows. So it's above R1, below R2 right now. Yes. गलती तो नहीं ना कोई नजर आ रही. Meaning if it makes R1 as a support, so this mid-band I don't see anything wrong. Only thing I see wrong is severely overbought. So divergence है 30-20 mean 15 में और 30-20 overbought. So maybe Fibonacci boxes in this case, but the green one, let's see. But right now we are very close to R2 anyway. एक झटका और लगा तो उसने 13 पे ले जाना है. बॉक्सेस तो ब्लैक कैंडल के बाद आएंगे. हाँ जी. Done? No, don't click. Go to trade await and just refresh. Very close, 10. When it is appropriate, any display. No, not yet. So we just keep that chat open, please, on the right side. Yeah, see what if they say. अभी अगर ये 10 से नीचे गई ना फिर 13 ना लीजिएगा, फिर 16 से ऊपर, क्योंकि अगर ये यहाँ से अभी तक तो ये 10 पे खड़ी हुई है, ऑलमोस्ट 11 पे. Yeah, whatever, man. David Randavasa, it's okay. It can go anywhere. We play. If trend is up, we buy. Trend is down, we sell. Our area's computer has predicted for. So what is gold saying today? It should go to 38 if it goes down to expected. There you go. That mid-band 1510 was okay yet or not? Let's see. ठीक है. I moved it above 116, my order right now, because it came from 11, and I said, man, if it goes and pushes back up, it should go towards 16. That will create a divergence on 30-20, meaning I have more chances to go down. So I'm not taking 13 entry anymore. Nasdaq, give me 1 second. There are our boxes are there at expected high. So let's see if R2 gets respected yet. If it creates a bit of a momentum. Live threshold है, bull knock. EA, PA दोनों. Yes. But EA bull knocks you can clear in 1 day.
Gold over areas for today expected low is 38. 38 to 23. Yeah, 28. So yeah. So 28.3. It would be a good buy. 28.23. All right. It's at mid-band right now. So Fibonacci boxes are sitting at 5888, 5889. But right now we have to see which way mid-band goes. 30-20 mid-band worked. One good ho gaya ji. Now I think it should go to 16 or higher. I 16 पे देखते हैं कि रुकती है कि नहीं. कि Nasdaq पे तो बॉक्सेस बने हुए हैं तो पहला स्टॉप तो नहीं ये तो अभी ट्रेंड के अंदर जा रहा है. कंटिन्यू ट्रेंड हो रहा है. अभी तो हायर हाई हायर लो बन रहा है. जब पहला लोअर हाई बनेगा ना वो हमारा ट्रेंड नीचे की तरफ क्यू कर देगा कि सर नहीं देखिए हायर हाई बना उसकी ये स्विंग आई ये रिट्रेस आ रही है. ठीक है अभी हायर लो बनेगा. जब पहला लोअर हाई बनेगा ना ऊपर नहीं लोअर हाई नहीं बना. हायर लो हायर बना. नहीं वो 15 तो देख ही नहीं था. सॉरी नो नहीं आपने वैसे इसमें भी मिड बैंड निकाल लिया. दैट्स गुड. It's okay. 4 set steps. You put a stop loss and so Fibonacci first box is working so far. So it went inside the blue box and went going back up. Let's see. Nasdaq is back into R1. Let's see if it makes it as a support and it gets enough momentum. It will go to expected high. Yes, in R1. अगर इसको सपोर्ट बना लिया ना इसने तो फिर यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए. हाँ बनाया जी. अब इसको जाना चाहिए ऑल द वे टू 16 तक तो जाना चाहिए. लेट्स सी. Yes, चलें देखते हैं. Let's see what happens. So this is for your first lower high now. देखें कि अगर यहाँ से $30.20, I'm checking the fib boxes, the green, blue, red, yellow. Let's see what Nasdaq wants to go. Above R1 or below R1? $16 तक तो जाना चाहिए सर. Because the difference between Nasdaq and is almost 800 points. So 100 divided by 7 is 14 points. So the current price is 5,900 plus 14. Yeah. So 16 तक तो जाना चाहिए सर. So let's. So 5916 is what I'm waiting. Just waiting for Nasdaq to race to R2.
जी सर नहीं देखो जरा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 4 ਹੋਏ ਨੇ 4 ਕਿ 5 ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅੱਜ चलो मैं देखता हाँ जी सर ये 4 नजर आ गए ना अगला देखो नहीं वो तो कल दे आज दे देखो सिर्फ आज दी डेट था हाँ जी सर 28 आज पांच होए ने नहीं 5 होए आज दे सिर्फ 5 वो आ गए ने इधर थोड़े ठीक है हो गया हेलो सर कनेक्ट टेक प्रॉफिट है आ गए हाँ जी पुराने हेलो जी यस 906 नहीं सर 2 5 6 4 9 नहीं हेलो सर कंप्लीट कंसोलिडेशन राइट नाउ नहीं सर हो गया सर डन हो गया सॉरी हाँ उस टाइम हो गया डन आई नो चलो होल्ड हो फिर नहीं मैंने नहीं पता क्यों कितना ना यार चलो नो प्रॉब्लम ओके थैंक यू ठीक है सर रेडी है थोड़े उससे रेडी ओके जी अल्लाह प्रैक्टिस पहले जवाब भी ठीक है सिम का प्रैक्टिस कर लो of 5905.5 से लॉन्ग कर क्यों मिडमैन से +5 करा तो क्या बोलूं कंफर्म सही बात पे तो इसकी ज्यादा
Nasdaq wants to go to R2. Let's see. जी सर नहीं वो एक वाले रिवर्स हो जाएगा नो प्रॉब्लम हुनी देख लें हाँ हाँ हो जाएगा शामी तक ना होना टिकट कर दूंगा नो प्रॉब्लम नहीं वो थोड़ा डिले होया ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੱਡ Let's see if it goes to R2. So this mid-band ले सकते 30-20. हाँ ठीक है दोनों हायर हाइज हैं तो should be okay. Above R1, but if the color changes, then we exit. Let's see. This is pure consolidation, up, down, up, down. No, you gotta get out. R1 is very strong holding right now. Suspend it so game goes.
Price is stuck at R1, deciding to see which way it wants to go. Again, back in R1. All right, let's see if it goes towards R2 now. Which stocks are moving? So Nvidia took $2 back. 122 पे बहुत नीचे है. 133. But it went as low as 117. Maybe almost 10% down. बहुत down है जी. Possible, but the whole hype of AI kind of died down. इनकी ऑर्डर भी बड़ी सॉलिड है because black oil is not available. No, things are not like this for even trading because of Trump. Every day comes, and now we have the March 4th Canadian tariffs. Yesterday he said European tariffs. So because every time he speaks, there's big issues that we face. All right, one more time R2. Let's see. Sir, 16 पे मेरा. क्योंकि यहाँ से it says let's say if it goes to 830 minus 750. That's 80 divided by 7. That's almost 11 points. So 59.10 minus plus 11. It will put me above around 8. My stop loss has to be around 21. So, yeah. 16 plus 5. So,
Right now we have struggling time between R1 R2. Nasdaq almost in R2, very close. How far? No, not yet. Still has 50 points. सर 16 होना चाहिए. सिर्फ नैस्डैक में ना फर्क ज्यादा है क्योंकि Nasdaq is still 810 minus 755. That's 55 points divided by 7. Still from here 8, 6, 11 plus 8. It could go to 19. Could break because जो फर्क है ना Nasdaq और ES का, ES तो आ गई है ER2 में, लेकिन Nasdaq में अभी भी almost 40 पॉइंट 50 पॉइंट का फर्क है. Why is Zoom is still working? We are inside the R2.
of 13. उसने अपना ही रिस्पेक्ट कर लिया है. चौदह 25. मेरा ख्याल है नैस्डैक का रुख अगला कैंडल नीचे की तरफ है. Because 11 o'clock candle is heading down for Nasdaq, so it may bring ES down. Do we ever look into the synchronization? Yeah, I watch it. Yeah, because the way I'm constantly keeping an eye on Nasdaq just to see which way the direction is. Because if Nasdaq goes down, ES goes down by 7-to-1 ratio. So 7 points of Nasdaq is about a point to ES. So I just want to see a candle behavior, because right now Nasdaq is trying to, with this new candle, if it's trying to go up, ES will go up, right? So that's why I quickly see right now we are sitting at R2 here, very close, but here we are inside R2. So they like to be synced with each other, right? So I'm looking at it. The gap is almost, what is the price? 770. So almost it's 40 points. So if it moves up 40 points, that's divided by 7. So it will put me above 6. So at least 6 points. So my entry then will be based on if Nasdaq bounces from R2, where could I land inside Nasdaq ES? So that is the index between these two indexes. Yes. So because there are 500 companies S&P, 100 in Nasdaq, 75 are together, and these 8 which cause the headaches are in both. So green है तो buy करी जाए. Still we can attach Sorry. with that. Yeah, but it kind of got too late because 2 got tested already, right? So you always I should have taken it, right? That's the problem. And the one you then take is the one that hits the stop loss. Sir, 16 अभी safe नहीं है. मुझे safe लग नहीं रही. नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट मैथ दे देता हूँ. इस वक्त 772 is Nasdaq. Area is, let's say 820. 820 minus 772, that's 50 points divided by 7. Almost 7 points from here. So 5912 plus 7. Around 5919 if Nasdaq gets into that area. So 59. That's where would be a better sell if Nasdaq respects R2. Because right now, one station is like NQ, it still hasn't touched yes, NQ is still valid. Sir, Nasdaq पहुंचेगा 820 पे, 20,820 पे, तो ये पहुंचेगा 5920 पे. Still अभी तो डिबेट हो रही है कि हमने नीचे जाना है ऊपर. On 1510, that's a lower high though. Just keep an eye on that for that mid band.
करती ना R2 चिल्ड्रन बन गई है आपने R2 नैस्डैक का वेट हो रहा है। नैस्डैक ने स्पीड पकड़ी ना तो फिर इस तरह ही पकड़ लिया, क्योंकि boxes are there, Fibonacci retracement on Nasdaq 60 minute. Nasdaq boxes are there now and they're falling inside expected high. still I think sell order is okay. Sell order for थोड़ा ऊपर, 19.75 से लगाया क्योंकि दोनों में 60 मिनट में डाइवर्जेंस की लाइन बनी है, तो it should go up. That's so 58.58 was the number, then it came down to 58.57, made a divergence, went back up almost 60 points. Let's see if it breaks. Because remember, at expected high, it would have entered our value area. So we're at expected high is a good number, solid number for today. $5941. Yeah, 41 is the value area, but we are looking at, let's see, 55 to 45. Wants to go to the Nasdaq candle. This 11 o'clock candle is heading down. Let's see. Maybe it touch R1 one more time and go back up. Gap trade बनाया उसने. अभी 2021 है अभी कैसे है Fibonacci boxes are sitting at 5,900. I'm in from mid-man. 5907 से एंटर हूँ मैं. बाइंग में जी, बाइंग. मैं देखिए मैंने ऑलरेडी $20 शो कर रहा है मेरा 2 माइक्रो मिड बैंड. हाँ 2 पॉइंट ले लिए.
देखिए मैं लॉन्ग में बैठूंगा अभी थोड़ी देर, ताकि नैस्डैक अगर सिर्फ पुश ऊपर की ले लेना तो लेट्स सी विच वे. 2 माइक्रो because it's above R1, trying to go above to expected high. Why not take? So maximum I've seen is $20 with 2 micros. R2 के Nasdaq का 810 से 830. $30. The moment your tick's behavior starts, remember the way tick works is you will see like $12, $0 minus $12 minus 37, 37.25, 37.25, 12, 37. So I've seen the highest 30. So maybe it's 30 with 20, 30 to 0, 30 to 0. So let's see. Right now it went as high as 30, as low as minus 20. So let's see if Nasdaq has a candle to the downside. So no, doesn't want to go up. So Fibonacci boxes will start at 5902. So what's the 50% retracement? 317. Basically, respected R2. Somebody Yes. sells down there. Yes. They could have made very good money. R2 it respected. FTM में सेल तो बहुत दूर है जी, अभी तो बाई की तरफ बैठे हैं. 1440 के ऊपर. Three six. नहीं अभी R1 के अंदर खड़ी है. Look at 3020. It gave me those fib boxes. 59. How do you know fib boxes is 52? 1 second. So on 3020, it gives you those fib boxes. नहीं जी नहीं, अभी तो स्विंग की रिट्रेस चल रही है. 3020, this is a retrace right now. किसका? Account balance minus trailing threshold. In rhythmic paper. So RO liquidated threshold value is what you have to watch for.
No, Nasdaq came down. Now we are into lower lows. Everybody just panics, right? Nasdaq is negative हाँ नीचे की तरफ चलनी 600. Money saving is money. बनना तो चाहिए सर, कोई रीजन तो नहीं है. तो ये जो फिबोनाची बॉक्सेस दिखा रहे हैं इसमें इसके अंदर हमें सेल करना है या बाय करना है अभी? नहीं सेल होगा. If it breaks the red one, then we have to buy. Right? Yeah, then you have to sell from the red box. नहीं नहीं अभी नहीं सर, अभी जब तक कलर नहीं चेंज होगा. 15-10 की परवाह नहीं है मुझे. अब कलर चेंज हो रहा है. अभी भी कलर चेंज नहीं हुआ. 30-20 में तो भी नहीं हुआ change. अभी तो ये रिट्रेसमेंट है, लेट्स सी. अभी decide होगा. Yeah, for Fibonacci boxes only 30-20. So red box came in the yellow. 7.75. Tesla. Brace for more Tesla losses. Because the way whatever goes up must come down, whatever goes down must come up. So वो बंदे कम कर रहे हैं.
उसके पीछे पड़ गए हम. $30 color doesn't. Color changed fast. That just happened too fast. So So if we need to take a buy, so it should go above red box, right? yeah, no, not above. Right? It has to make a higher high, then you buy from mid-band. Today, 4 mid-bands kind of give us swing, retrace, extension. Let's see. Back into R1. I don't predict fib boxes. It just shows up on the chart on 30/20. Right now, there's a fib box chart. Again, R1. ज़्यादा मसला हॉटस्पॉट ऑन करना. That's your first higher low. So it'll put me at 5,900 as my buy stop.
Let's see. Buy. Again, lower low, lower high, first higher low. So 58.92 plus 58.92, 25 plus 8.5, 5,975 or even. So that's where my black candle to the upside will come. But if this number keeps going down, we will adjust our order accordingly. There you go. It's moving, so we don't. Any midband coming from a lower high is always risky in long. आज तो higher और low वाले midband भी दो stop loss ले. So let's see which way. Let's see if this will be an extension. It needs to break 58.86 approximately. There you go, almost very close. Tesla is at 290. Let's see. 290? हाँ. 217, 215 चल रहा था. So 5888 plus 5888 plus 8.5. So 589. So that is buying? That would be a buy stop because according to the theory, in my swing retrace extension, my extension will confirm very shortly anyway. But if I was to buy, I would buy at a black candle to the upside. 58.96.50. Yep. That's where my buy would be, correct. But if it breaks the 86, then buy stop, buy spot. $58.96.50 is the current buy stop. 75. Okay, that's fine. That's fine. पर अभी वो ब्लैक कैंडल में भी सिर्फ दो ही रह गए पॉइंट्स. अभी वो लोअर लो बन जाएगा तो हमारा सेटअप फिर फेल हो जाएगा. मीनिंग के हम we can't take that trade anymore. Done, Finn. So this we won't take this buy stop anymore because it doesn't make sense. We cancel that order because that is not a valid order anymore. Because swing retrace extension did become, so right here, swing retrace extension got formed, right? So unless it gives me a lower high, that would be my direction to go upside. There is no lower high yet, so we go back to the drawing board and figure out what to do. In these swings, when Fibonacci boxes work better compared to midbands. So of this swing, the moment there is a black candle, you will see red and yellow on the other side. So that would be your retracement box. So let it wait to make a black candle. And you will have the fib boxes. There you go. One more time, it's heading towards S1.
Plan is, sir, low to go high is the plan. So because of divergence already, S2 से तो वैसे चलेगी वापस, दूसरी दफा S2 S1 की तरफ आ रही है. R2 को तो सर बड़ा अच्छा एक्सपेक्ट किया है प्रॉपर, लेकिन Nasdaq का R2 आया थी ना. But the number that I had written down, 20,400, never got there. Got to 20,460. All right, those boxes are there at 58.96, the fib retracements. 5896 is your the sell because honey for selling. That is computer is saying this is the Fibonacci retracement. It's a mathematical calculation. Swing, retrace. So retrace, it always gives it a retrace. So computer is saying if you were to sell from 58.97 would be a good number. Kind of a good number anyway because our R2, R1 is standing there. Let's see. अभी तक नहीं, अभी उसके अंदर ही है जी. ट्रेंड बेशक चेंज हुआ, अभी तक वो उसने लोअर हाई नहीं दिया, हायर लो सॉरी. अभी तो उसने फिबोनाची को टेस्ट कर रहा है. It's in the box now. So we're inside the box now. Let's see. That it will respect fib this time or not. Let's see. Top of the box now, 97, 96. No, broke the box. अभी नहीं see. स्टॉप लॉस 8 टिक्स का होता है सर. 8 ticks का.
अभी भी डब्बे रिस्पेक्ट कर गया वैसे। Full swings back up, fully back up to R1. दो तीन पॉइंट तो उसने शो किए थे। Now that became a swing. अब R2 की तरफ फिर जा रही है। Highest high went is 11. Come on, go to R2.
Nasdaq? नहीं, sorry. R2. Both are between R1, R2. Very much synced now. Coming mid-band is okay. तर अभी ग्रीन में तो फिर मैं दूसरा नहीं सोचता और कलर चेंज होगा तो निकल जाऊंगा. हाँ, ठीक. तो ग्रीन में तो बाय रहना है. सही. और अभी दोनों सीक्वेंस ठीक हैं. 30-20 हायर हाई, 15-10 हायर हाई. देयर इज नो नथिंग रॉन्ग आई सी. अब यहाँ से यहाँ से फिर 30-20 का मिड बैंड. तो यहाँ से लार्ज ट्रिगर खुले हुए हैं स्ट्रेंथ में. ठीक है. So either you pick the mid band or the Fibonacci box, the green one. So Fibonacci box will appear after the black candle. So retrace, you take it there or you take it through the midline. $317. How big was this candle? From 773 to 622. 773 minus 662, 111. 111 divided by 317. Was 35% retracement came. So technically your entry would be either here, 59, right about here. So इन्हें अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो यहाँ पर ये, so this would be a buy limit. So technically speaking, both are green, both are higher highs. I'm taking the 30-20 mid-band. Let's see if it works or not. Somebody says, because can you put your order? So maybe it will go in our favor. So I said, all right, let's see. So I said, hey, I don't have a problem.
मैं रिवेंज ट्रेड का भी प्लेज लिख देता हूँ. I will not do revenge trading. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. Incredible enough, 15-10 mid band. Yeah. उसने कहा राफे ने ऑर्डर लगाया हुआ है. तो good afternoon. अभी तक तो नहीं पिक हुआ. मेरा तो हो गया तो इंडियन ठीक. सर अगली बार कोई भी चीज आप छोड़ के जाओगे ना $4 का फायदा. 49 plus tax. Cash पे no tax. Okay. ज़्यादा कोनो लगे तो रेट में डिसाइड करेंगे. I can't do it. Daniel has to do it for you. Yeah. What about Vendor and Legends? So legends I can do. Any desk, just give me and I can log in. ये देखिए 15-10 का मिड बैंड. Only reason I had moved to 30-20 is I saw double divergence line, so I'm like, let's go to 30-20. One, 5, 9, 1593. 910. Yep. 289. Accept, please. नहीं. So we have to set up your legends? Yeah. Okay. Are you connected to hotspot or Wi-Fi? Wi-Fi. It's too slow. ये फॉर्म भर दें. ये फॉर्म भर दें.
Nasdaq again. मैं तो 20 का मिल रहा है 5899 पे खड़ा है. So let's say if I were to do the mid band, I would move it somewhere. Yeah, उसका price थोड़ा slightly different. Okay. क्या हो रहा है जी? 1 पॉइंट मिला अभी तक? नहीं, देखते हैं. अच्छा, ऑलमोस्ट 37. 1 पॉइंट तो आ गया जी. ठीक है, जा रहा है जी. 2 पॉइंट आ गए. ठीक है, मैं फिर हर दफा लगा दिया करूंगा मैं. Alright, so 125 हो गया जी. हाँ, नो प्रॉब्लम. कोई मैजिक नहीं है. लाइक ग्रीन देखा है, मिड बैन देखा है, लगा दिया ट्रेड. 137 हो गए. मैं हाँ जी, मुझे दे दें. 1591 मैंने क्या करना है जी? हाँ जी, ठीक है जी. मिड बैंड $262 का ले गया. ठीक है, एवरीथिंग इज ओके. नहीं कोई $26 भी बड़ा. पीए में $26 लेने होते हैं. तो 262 देखा था. लेस ये देखिए, लॉक कर देता हूँ आपके लिए. सेल स्टॉप $262 आ गए. हो गया जी. ट्रेड इज डन. नहीं, मैं आज 3 सेटअप्स कराए हैं. या 2 मिड बैंड 30-20 के फेल हुए. फिबोनाची 1 पास हुआ. 3 सेटअप्स हमारे से गए सही. वो जो हायर लोज वाले. और नहीं मैंने तो आपने कहा, किसी ने मुझे कहा भाई इस मिड बैंड पे लगा दो. मैं लगा देते हैं. सब कुछ ग्रीन था. 30-20 का मिड बैंड पे $187 लेके बाहर आ गए. सो मेरा क्वेश्चन है, जब शाम को अगर एरियाज में हम लगाते हैं 60 मिनट चार्ट पे जाके ईएस में एक लगा दिया सेल, या एमईएस में जाके नीचे से बाय करते हैं. ठीक है, तो 5 क्वांटिटी लगाते हैं. 10 5 क्वांटिटी नहीं 10. अच्छा, जब मैं उसमें करता हूँ एमईएस को कन्वर्ट करता हूँ 10 की क्वांटिटी लगाता हूँ तो ईएस में भी 10 शो करता हूँ. नहीं, कभी भी नहीं. आपकी एटीएम के अंदर क्वांटिटी 1 होनी चाहिए. एटीएम के अंदर. चलिए अभी लगाएं, एक अभी ऑर्डर लगाएं, मैं देखता हूँ. हाँ जी सर, आप जाएं, मैं आपको बताता हूँ. ninjablocktrades.com पे जाएं. अगर फ्लो बॉट अपडेट है, वेबसाइट खोलो ninjablocktrades.com. क्या करना था मैंने? ये जो लेवल से कितने आ रहे? एक सेकेंड. इंडिकेटर्स, वहां पर लेटेस्ट वर्जन क्लिक करें जो ऊपर लगा हुआ है. उसको डाउनलोड करें, जिप फाइल को. सिर्फ जिप फाइल. यहाँ अपना सुपर एरियाज का यूजर नेम पासवर्ड डालें. ये अभी भी 200 का, मेरे ख्याल है $150 का तो ट्रेड था ये वाला. चलो ठीक है, दैट्स फाइन. ठीक है, अब इसका आसान तरीका अपडेट करने का, निंजा में जाएं, कंट्रोल सेंटर में. नहीं गाइड ना खोले, मैं वैसे ही वर्बली बता देता हूँ.
तो डाउनलोड जिप फाइल कर ली, ठीक है। अब जाएं निंजा में टूल्स, इंपोर्ट, टूल्स इंपोर्ट, निंजा स्क्रिप्ट एड ऑन। अब वो जिप फाइल सेलेक्ट कर लें, वो जो 1.06.3 है लेटेस्ट। तो जब जब फ्लोबॉट की अपडेट आएगी ना, आपको निंजा ब्लॉक ट्रेड्स पे मिल जाएगी। मैं उसका लिंक सुपर एरियाज पे डाल देता हूँ। अब ना लीजिएगा ये मिडबैंड, क्योंकि वो रिजेक्शन विक से आ रहा है। आगे 16.03 थी ना? हाँ जी जी 03। एंड डबल क्लिक करना। हाँ जी, बस इंपोर्ट कर लेना। यस Still have the bus index में? no I think I'm give me 1 second. Yeah, levels are done, so I'm exiting Would out. you like to replace करना? yes would you like? सर यहाँ कूपन कोड डाल दीजिएगा, वरना फुल है। क्या मांग रहे हैं? हाँ पूर्ण। अब निंजा रिस्टार्ट कर दें। ये मुझे ना अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन लेजेंड्स की मैंने ना एक्चुअली पढ़िया का दिया लिया था, बट इट्स स्टिल शोइंग इन द सिमुलेशन कंडीशन। मैं अभी देख लेता हूँ। अभी बेटर कौन सा है वैसे? पढ़िया देखिए लेजेंड सबसे सस्ता इस वक्त $33 का लगा हुआ है। तो $33, that will tell you how your entries are. If your entries are okay, पढ़िया में क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन नहीं। कितने उसका प्राइस है? 650। सात दिन के बाद टेक द सेकंड स्टेप। या मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि what you have to do in this. So Fibonacci boxes are sitting at 5888. गोल्ड में 35 टिक्स 3.5। गोल्ड में 3.5 पॉइंट। That's 35 ticks. Olana 3.5 points. 35 ticks is 3.5 points. 10 ticks. 10 ticks is 1 point. So 35 ticks is 3.5 points. हाँ जी, पहले देख लें कि प्राइस 33 हो। यस ओके। और वो मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, ये है नहीं पहले मैंने आपकी एटीएम देखनी है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी। नहीं नहीं ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपकी यहाँ पर एमईएस में आपने 10 करनी है, जी ठीक है, यहाँ 10 कर दें एमईएस, नहीं 110 नहीं 10, यानी आपने 110 कर दी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ एटीएम कौन से सिलेक्ट करते हैं, एरिया की एमईएस, ठीक है। लेट्स सी यहाँ मैंने बाय लगा दिया, ठीक है, बाय 10 ये लग गया जी। ये वाला तो अकाउंट ही नहीं है इस वक्त। 5 ऐसी कमांड लगाएं जिसमें 300 बन जाए। सर मैंने तो मैं प्राइस अगर मैं मूव करता होता मैं आपको यहाँ नजर ही ना होता। ये बाय लिमिट लग गई। एटीएम सेलेक्ट करना है, हाँ एग्जैक्टली। अब ईएस में जाएं, ईएस में जाएं, यहाँ एक क्वांटिटी लगाएं ईएस की, एक 1 एक्सपेक्टेड हाई पे गए, सेल 1, और लेकिन यहाँ आपने एटीएम में लगाई एरिया डन। या अच्छा ये ऐसे होगा। ऐसा ही है। अब जैसे आपने देखा था ना कि जब मैंने पहले ईएस में लगाई वैसे क्वांटिटी तो यहाँ पे भी 10 नहीं नहीं फिर आपको रिड्यूस करनी है ना, वो तो क्योंकि चार्ट ट्रेडर है, अब वो दोबारा एमईएस में जाएगी वहाँ 1 ही दिखाएगा, तो वो उसकी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ 10 लगी हुई है ना, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 10 लगी हैं। अच्छा आखिरी बात ये बताइए, जैसे ये इसका बीच में कलर भी है और ये चीजें भी हैं, इसमें मैं उसमें मिस कर रहा हूँ चीज ऐड करना। नहीं आपने जब डुप्लीकेट किए हैं ना, आप इनको सारों को बंद करें, डुप्लीकेट ओरिजिनल को करें। अच्छा इसको, हाँ जी इसको एग्जैक्टली, इसको सारों को बंद करके डुप्लीकेट दोबारा करें। ईएस वाले को, हाँ जिसके अंदर सारा ही एग्जैक्टली सेम यस पैटर्न आ जाएगा एग्जैक्ट। ईएस वाले को। हाँ जी सो नाइस। नो प्रॉब्लम। जो लाइन डालते हैं ना स्काल्पिंग वाले, वो लाइन ग्रीन लाइंस, हाँ हाँ वो 30 वो 15-10 में चलती है, 15-10 में उसको मल्टी लाइंस इंडिकेटर्स में ना इंडिकेटर्स मल्टी लाइन, जिस तरह लिखा हुआ ना नाम विद कैपिटल उसी तरह वो लिखे। मेरे में वो दिख रहा नहीं है। मल्टी लाइंस डालें। वो काफी स्लो चलता है ना ये बॉक्स। हाँ it shouldn't be this slow at all. You should not be in this template at all. This is too slow. Let me switch this to fast. This is better. I'll remove because that's for old version. This is for new version. You will see your charts. Actually, I changed it from the laptop. So Yes, so it has to go to this workspaces. Yeah. So let it connect, and then so always use fast workspaces. Province वो कह रहा है जी, okay, फिर 33. आपका कौन सा थ्रेशोल्ड है?
थ्रेशोल्ड होता है वो भी करें। ओह थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपने 100 देखा आपको तो सिर्फ एक स्लो हो गया। नहीं आपने बिल्कुल ही बंद कर दी। $1475 रीस्टार्ट करें, एक दफा रीस्टार्ट करें कंप्यूटर। you keep profit and you close lower than your profit. Okay. The difference is deducted from your threshold. आपने 250 देखा 150 में क्लोज किया फिबोनाची बॉक्सेस से 2 पॉइंट मिल गए, $100 ग्रीन बॉक्स के अंदर आया। That's like end of the threshold. अब मैं आपका सेट कर देता हूँ। आपने 400 देखा 200 में क्लोज मैं फर्स्ट टाइम अभी मैं सैमुलेशन पे हूँ, फर्स्ट टाइम मुझे परचेज करना है तो मुझे कौन सा करना है? Trade Legends. This is the best discipline-based company. I don't recommend Apex, Billnux, because they have live trailing threshold, and you will get confused on how that works. So Legends. Legend treats it like very original money. So for $33, you get $1,500 to be able to. Legend 33 का है ना? नहीं 28 तो नहीं सारा। नहीं लेजेंड नहीं, बुल लॉक 16 पे है, लेजेंड अभी भी $33 है। सर इसकी फोटो ले लें, ये आपका यूजर नेम पासवर्ड है ट्रेडविगर। सो लेट मी सेट इट अप फॉर हिम and then I'll since I have to explain him what Legends is, I'll explain you too as well what ठीक है। नो आया नहीं नहीं ये आपने फास्ट वाली बताई। मेरे सारे दिखते हैं। I don't know why it's so slow though. It shouldn't be. It's because I trust the yes. Okay. Mid price line बोलो। Multi lines, MD multi lines.
MD multi-line. No, you have to add them. Oh, okay. So let's do 100 line, and the price is, let's say, 5900. Make sure you save this time. एक सेकंड सेटअप देख लूं. ये नीचे जाने के लिए ये हायर लो लोअर हाई -8.5 ये आपका सेटअप नीचे जाने के लिए. इसमें ये थोड़ा सा डर इसलिए लगता है कि हाँ ये है ना आपको यहाँ आके डाइवर्शन यार वो तो हमेशा ही रिस्क रहेगा ना. आप 30-20 को देखें कितनी दफा बनाती है. जनरली जब ओवर बॉट होती है ना उस साइड पे तब ज्यादा पावरफुल बनती है. तो फिर इसको इग्नोर कर दें. अगर वो मिडिल में आ रही है, अगर 80 से अबव आ रही है तो बेटर है ना, या नीचे 20 से बिलो आ रही है तो बेटर सेटअप है. दरमियान में आ रही है तो इसने कहीं से भी ले जाए, वो डाइवर्जेंस बना के ले जा सकती है. राइट. तो मैंने इसको बुक मार्क कर दिया. Okay. So let me explain you what you are watching. All right, let me explain quickly and let me connect this to Ninja first. हो गया जी आप दोनों का अपडेट. 1 पॉइंट सर फ्लो बॉट के ऊपर लिखा हुआ है 1.6.003 फ्लो बॉट की विंडो पे. वन 1.33 नहीं जब वो पॉपअप आए ना उधर तो निंजा ब्लॉक ट्रेड से लेटेस्ट डाउनलोड करना बस. नहीं एनी लेकिन सर अगर अब लोअर हाई बनाया है वी कैन मूव द अदर ब्लैक कैंडल. अब ये भी रिट्रेस कहाँ से आई? फिबोनाची बॉक्सेस के अंदर से. देखें रेड बॉक्स से रिट्रेसमेंट कर रही है. 30-20 में रिट्रेस वहां से आई है ना, रेड के अंदर से.
No, we don't have NBT running. It didn't work. Orders were going all over the place. Yes, that's how you would do a sell stop order. हो गया सर आपका account all set up. आपका एनी डेस्क नंबर क्या है? 1593 एक दफा एक्सेप्ट कीजिएगा. 5904 minus 8 Can you take new account with this code with the new email address? Would they validate email? No, they validate email. So go into the email, and you can buy a new account, but the same email, please. No, then I mean I had once, so I can't benefit the discount code. No, that's maybe depending on if there is time or not on that code, right? If you log in, depending on, So I mean from the new email ID I can buy new one. you can buy a new one, no problem. But your name, yes, exactly. If you see you have two accounts, same in this. Yeah. Let me quickly explain you what this setup. So these keep this with, open this website before you open Ninja, because this is telling you what your balance is, what your ledger is, what your threshold is, everything. So and ये लाइट बस लाइट को टच कीजिएगा. Perfect. So to explain, the setup today is February 28. Legends, $33.
5896 हाँ तो 5896 पे हिट हो रहा था। Okay, so this is the account you have. This is called the Legends Apprentice account. Today is February 28th. You spent 33 US dollars. You have 1 month, calendar month, not what is your goal? 5 conditions. Make 1500, don't lose 1500. Do this no more than 30 days. Try to finish it within 30, but don't do it before 7. Don't make more than $450 a day, and do 4:30 p.m. close your trades. So, Didi, excuse me, 6 p.m. counts as the next day. So the market is opened 23 hours a day. So the day starts at 6 p.m. to the next day. नेक्स्ट डे अगर हमने शाम को बनाया 200 वो- 250 बना सकते Exactly. So 6 p.m. Just remember, from 6 p.m. onwards is your new day. 6 p.m. to 5 p.m. Sunday 6 p.m. to Monday 5 p.m. is your new day. So today, if you make today, you can still trade today. So it'll count as day number 1. So if you 6 p.m. to 5 p.m. every market is 6 5 p.m. The next is 1 8 p.m. and you picked $50 or lost $50, you still have until 5 p.m. to complete that one day. So you have to make 1500, don't lose 1500, do this from, so only catch, there's a catch to this is your, see, you're seeing 25,000. Don't look at this number. This is just your ending number. Doesn't matter how much account balance you have. You only have $1,500 to work with. For $3,300, they give you $1,500. So this is stage 1. Let's say today you traded plus $100. They will not add any more money to your threshold or drawdown. So this is fixed or maxed, I should say. So if you made 100 today, it's not like tomorrow you can lose $1,600. So you can, tomorrow will come, you can lose 1,500. Day number 2, you made another $100, zero. You get zero. If you make like $100 a day, you'll finish this test in 15 days. Most people go up and down, they try to finish it in 7. That's not the goal. Goal is 100 to 150 a day. Park this account, don't trade in that anymore. And let's do here. You lost $200 on day number 3. You close your computer, you're like, all right, I'm not trading anymore. I've taken my losses. So your threshold does go down. Now you have 1,300 available. So this is always fixed and this is always fixed. Day number 4, you made $200 again, or 150 or whatever. Of course, your threshold is back up again. So your target is to get to 26,500, and you make sure this doesn't go to 0. If that goes to 0, let's say you take a trade minus 200, 300, 400, minus 1,500, and so that's your account is gone. एंड ऑफ द डे अगर आपने यहां पे 26500 बना लिया Yes. भाई आपका थ्रेशोल्ड है वो 1100 कोई बात नहीं, pass है. You're still pass. Doesn't matter. So as long as you get to this number, even if you have $100 left, that will not be possible because you're making money. Threshold is rising again, right? So you're fine. But you know what happens is, this is a normal, typical scenario. So day 1, you lost 450. Okay, you lost 450. Now your threshold went down by 450. And next day, you don't lose 1,500. You only have whatever available in that 1,500 column. So next day, if you lose another 450, you're down 900 already, right?
So, and then third day you lose 450 again, your account is practically gone, right? So don't lose more than, it's a smaller account, aim for $100 a day. Honestly, it's easy. If you have a setup with 5 micros, I'm in my Legends second payout, 5 micros. I did 5 micros. Give me exactly, per day I made $279, 5 micro ES. And Legends I did $314. Only 2 or 3 trades, 5 micros. In PS. क्योंकि पीए में था 5 माइक्रो में यार, बस क्योंकि 25 की जगह 50 का, 50 की जगह 25 का हो जाता है ना रिस्क, रेदर देन कि आपके मेरे पास थ्रेशोल्ड एक गलत लगा तो वो 200 चले जाएंगे, रेदर तो उसको कहा मैंने भाई 5 माइक्रो से एंटर, स्पेशली पर्डिया में तो माइक्रो इस करते हैं. My 5 years of research shows every $1,500 equals to 1 micro. You try to feed more money into this. In ES state, yes, you can play a little bit aggressive because you are trying to clear it. But in a PA, please, this is where I say, and I played with 5. So when you are doing 2 per day, let's say 3,000, 2 micro is good enough to take and trade inside, right? When I used to do fast trading and we made like $60,000 on 7,500 threshold, I used to go 5 MES or 5 MNQ because it's only, so really works. Micros are powerful because when you are on Apex or Legends or Bull Knox, $50 to $60 a day, you can get your target going, right? Because remember, the account size is not that big to able to take like multiple lots, even though give you 4 lots, but you know, it can blow it quite. With micros, $50 a day on a micro can get you $1,500, no problem. No, most traders will be able to get to, let's say, $50 a day. Within a month, your first payout can come. It's that rush to get there faster. Like, I want to just, finish it. I'm told I can do this in 7. Yes, EA, you can play a little bit aggressive. Why? You have 30 days to finish it. For God's sake, I keep selling PAs, guys, there's no stress, right? Every time 1 or 2 days, like mini will go okay. But one of those 2-3 days, it will wipe out your account, right? If you get 1,500 in 15 days, we have to trade for the other 15 No, days. no. The moment this number goes to 26,500, you have passed the account. And I beg everybody, the moment you have a PA, your timeline stress is gone. My Bull Knox went up, went down. Couple of times, big losses, 300 each. Stopped at 350, then stopped at 350. Then I built it back up. Account should be there to be able to build back up. If there is no account left, so I have a rule. If I lose $350, I'm not trading in that account. Meaning, it's too much for me to lose because then I gotta go back, do EA again. I gotta do my PA again. I gotta build it. So set a limit that if my PA today has a certain bit of a loss, I'm not trying to recover. No more revenge trading. So this is it. This is what you have to do. Per dia is a little bit easier because you go straight into, my per dia was almost, it's been, what? सर ICU मैं आपको बताता हूँ उसकी हालत क्या है. $1,200 प्लस फुल थ्रेशोल्ड, फुल पूरा रिकवर किया ना सर. एक अकाउंट हमने उस दिन लिया था, मैंने और इन्होंने वो, लेकिन यार नहीं इंटरेस्ट रेट वाला दिन, इंटरेस्ट हम 18 दिसंबर को अकाउंट था, हमने 2 माइक्रो से गए, सिर्फ 2 माइक्रो. इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मेरा हिट हो गया, ठीक है. वो इनका ना अकाउंट बिल्कुल डेड होने वाला था. Then I said, until I see an opportunity, it's not bothering me. Dead तो नहीं है ना. So I just कहीं $10 ऐड कर दिए, कहीं 50 कर दिए, कहीं 100 कर दिए. जैसे जैसे उसमें जान आती गई, then I played aggressively. Today, $279.
राइट। अब वो उसको एक तो पूरा कवर कर दिया और एक 1200 कर दिया, अकाउंट भी ठीक है, सब कुछ है। तो होपफुली इफ आई डोंट मेक अनदर मिस्टेक of playing aggressively, I should. So the works out, the idea is micros will not kill your accounts. Yeah. Minis will immediate. So when you get into PA's place, get into even the 50,000, maybe 5 micros, maybe. Because what happens is one of those 2 days are it's okay because it goes up 700 but then comes down 700 fast, right? So this is what my game plan always is. What I've done, like at least if you have $1,500 PA, one MES, maybe two. So if sir, we get, for example, today, after 1 month, it will renew for $33? Yes, EA will renew for $33. If we get to that. Correct. सर इधर आगे रोज भी हमें एक दिन में मिनिमम इतना करना वो राउंड 2 का है, राउंड 1 में नहीं। राउंड 1 में ओनली एक रूल है, 450 से ज्यादा नहीं बनाने। अब 200 बनाए, 300 बनाए, 400 बनाए, 450 से ऊपर आपका टारगेट बढ़ा देते हैं। तो ये ओके, सो ओके राइट नाउ आज आप जो है टुडे यू आर ऑन समथिंग कॉल्ड स्टेज 1. So stage 1 means that this is not real money. They just want to test you before they give you real money. So this is your list of. So when you get to this target, I know it looks so good. Hey, just 1500 banana, right? They're testing your discipline. That's why this word of 7 days, they have put, every company has put, most of them, even Perdia has 10 days. Why? 1 day you will gamble, 2 days you will gamble, 3 days you will, 4th, 5th day gambling doesn't work because then you're like, my account is gone, right? So they want to see you, this person coming in 6th day, 7th day, because they know most gamblers will exit by 4th day, 5th day, because they go in 1st day, and most gamblers will not be able to pass a PA, I tell you. So the question is, yes. are they looking at what method you No, they don't care. You do mid band, you do overbought, oversay, you do area, you do higher high, lower highs, doesn't matter. All they care about, this account needs to go here, this account needs to go not to 0. That's it. So they don't care judgment on, you can do Fibonacci, you can do, you can bring somebody who's blind and just hit buy and sell, 50% they will pass too, right? So this is how trading. So the rules of PA. So what will happen is you will get to this, they will congratulate you, and they say, all right, you have, if so, let's discuss the 3 options. The outcome would be you pass, or you fail, or you will do something. So if you pass, you pass, good. You move into the round 2. If you fail, you can cancel this account and then buy another one. The price ranges from $33 to $50. I have not seen more than $50. I have some people who take higher exams. The ones that's 300,000, 150, they like to roll over. So on the next, so they want to carry over. So if you have, maybe you made $1,200, you still have threshold. You don't have to cancel it. They will charge you another 33. And it will go into round number 2. Month 2, not round 2. Pass, you fail, or you do a rollover. When you get to round number 2, couple of things will change. So these conditions change. So it is, we use it called PA or master account. Your cost will go from, so they want you to risk 10% of the money. So they will provide you $1,500, but they will charge you $150. Number 2, you have to make $2,000 before you get a payout. Number 3, infinite time. No rush, sir. Minimum $50. 10 plus days. No, EA, yes. PA, no, there is no monthly fee. Once you paid $150, it's one time.
Number 7, 8:15 and 4:30. So these are the rules for Legends master account or performance PA account. Minimum 150 बनाने, 150. Oh sorry, Apex का लिख दिया 150 इनका. Minimum 150. 150 per day. Yes, in order to pass. सर एक दिन 150 हो, एक दिन 200. ठीक है, सही है. Minimum 150 है ना. किस दिन 100 हो गया तो वो पैसे काउंट हो जाएंगे, डे काउंट नहीं होगा. So what they ask you is make 2000. So this number needs to go to 27,000. Okay. Don't lose 1500. So it's a slightly difficult exam. You don't have no time limit. You can take a year to do this. There's no monthly fees. If don't make less than 150. Yes, some days, if I make $80, it's okay. I'm not going to stress to make 150, but I made 80, it increased my balance, right? Someday you don't even work. It's okay. That doesn't count. That day doesn't count. So the day when you make 180, so $80. Yes, So what will happen? day doesn't count. Because remember, I told you, you have to trade at least 10 days before you get your money. So let me draw easier for me. Let's draw 10 boxes. And let's give me, remember, you have infinite time. So, but minimum 10 days. Perdia says the same thing. Perdia says make at least trade for 10 days. So, if you, first day you made $100. 1500 ये होगा. कि किसी दिन आपका बन जाता है, 200 बन जाता है, 250 बन जाता है, 400, 150 तो 10 दिनों में. 10 दिन में, लेकिन कोई से भी 10 दिन हो, ये नहीं. Then the day doesn't count, money counts. So let's do some real life scenario. Day 1, today is your master account. How much did you make? 117 or 117. Remember this. All right. Day number 2. $80. I'm not gonna write it. 220. Good. And do add the losing. Zero. कोई पैसा नहीं मिलना. Okay, no problem. नहीं, लेकिन याद रखिए, किसी ने 350 से ज्यादा नुकसान लिया ना और मेरे पास आए कि इस अकाउंट में, फिर मैं मुबारकबाद दूंगा. क्योंकि 350 एक दिन लूज हो गया जी. हाँ, 350 जिस दिन लूज हो जाए, अगर उस पीए को छोड़ दें यार, मीनिंग आपके माइक्रो में आपने 350 लूज कर दिया है. एक तो मैंने आपसे कहा हुआ 2 माइक्रो करें, दूसरा आपने 350 माइक्रो में कैसे जाएगा यार, कहीं कितना चलेगा, 200 माइनस 180 माइनस. माइक्रो खेल रहे हैं आप, सोच रहे हैं मिनी में मैं 350 लूज करूं. ये भी माइक्रो में बनने हैं. रिमेंबर 1 माइक्रो $2 का है, ES $5 का ES का है, और NQ का है $2 का. 2 माइक्रो NQ की इतनी पावर है एरिया की कि आपके 2 माइक्रो 40 पॉइंट मूव हो जाए ना तो $4 का बनता है. एक $5 का 5 है ना. तो आपका, अब मैंने आज ये जितने किए 5 माइक्रो से किए, राइट. 5 माइक्रो से 300 बन जाता है यार, इतना मसला. तो 3 माइक्रो ले लो, 2 ले लो, आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही होगा, टीपी भी उतना ही होगा, राइट. सो लेट्स से यू टुक ए 350 लॉस, ठीक है, माइनस 350 इधर आ गया. ट्रेडिंग नहीं काउंट हो, हमने ट्रेडिंग डे तो काउंट हो गई होगा ना. नहीं, ट्रेडिंग डे नहीं काउंट हुआ ना, लेकिन क्योंकि आपको 10 दिन चाहिए ना 150 से ऊपर वाला. यस, ठीक है. अगले दिन आप आए, आपने 200 रिकवर कर लिया, आपको उन्होंने थ्रेशोल्ड भी वापस दे दिया, राइट. सो योर थ्रेशोल्ड वेंट बैक अप टू, ऑफ कोर्स इट काउंटेड एज ए डे. So now you say I'm not trading for a week. CP आया, अस्पताल चले गए, किसी की शादी, आपने नहीं ट्रेड डाला. कोई जिससे कहते हैं ना, स्वाप का काम नहीं है कि रोज ही ट्रेड डालना है, मीनिंग कि दिन नहीं बन रहा तो मैंडेटरी नहीं है. आप
4 दिन बाद आओगे अकाउंट भी उसी तरह खड़ा होगा, इट्स फाइन। सो इट्स नॉट लाइक 9:30 पे डैम टूटना है और आप खाने पे पड़ जाना है, नहीं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो सेटअप्स पे चलेंगे तो आपके पैसे बनते रहेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है हाँ जी, तो then they will give you $1,500 in that. So any money you are earning there is yours. So this, हाँ, रियल में है। हाँ, लेजेंड में आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है, जिस तरह एपेक्स में होता है, पीए में उस तरह होता है। बट लेट्स सपोज यू मेड $500, आपका अच्छा ट्रेड लगा, ट्रेड वेट बंद हो गया, गलती से आपके 500 बन गए, ठीक है। आपको आपका थ्रेशोल्ड उन्होंने देना है 150, क्योंकि 100 फर्क था ना। तो अपने एक दिन में 450 ज्यादा ना आते। नहीं, मैं इस तरफ आ रहा हूँ ना। ये 500 बन गए ना, ठीक है। उन्होंने आपको एक दिन भी दे दिया, 500 भी दे दिया। उन्होंने ये नंबर लिया, इसको डिवाइड करेंगे 30% पे, ठीक है। एक फिगर आता है, 500 का 30% बनता है 150 नहीं $1,600। I think you're still okay. You know why? Because you have to make $2,000, right? So अब even though इसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पिछला रूल ये था कि 2000 का 30% बनता है। I think you can go up to $600 without any issues now, because this rule used to be for 450 when this was 1,500. They increased it to 2,000, so now you can take up to $600. It's not 450, it's 600. So whatever your final target is, round one में, क्योंकि round one में 450 इसलिए था क्योंकि आपका टारगेट 1500 है, टारगेट 1500 था ना, तो राउंड 2 में ये टारगेट 600 पर डे से ज्यादा नहीं जाना। एपेक्स में एक रूल है जिसकी वजह से, एपेक्स में मसला ये है, वो कहते हैं कि माइनस में भी नहीं जाना। ये आपका बस आपने याद रखना है। ये देखें, ये वो सेटअप बना था सेल का, ब्लैक कैंडल का, कितनी तेजी से गई। एक सेकंड, नहीं एक, मैं जरा ब्लैक कैंडल वाला देख लूं। ये देखें जी, मैं सिर्फ आपको ब्लैक कैंडल का सेटअप बता दूं जिन्होंने देखना है। हायर हाई, पहला लोअर हाई आ गया, ठीक है। आपके पास क्यू आ गई, कैंडल से यहां से सेल करें, इतनी बड़ी क्यू आई है 18, और फिर मिड बैंड आता गया, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, 3 ट्रेड ये भी चल गए। सेटअप आ गया हायर लो। मेरा ख्याल है विक्रम भाई, अगर ये क्लोज बना ना, अगर लोअर हाई बहुत क्लोज बन जाए फिर वो डाइवर्जेंस बनेगी। तो क्योंकि वो लोअर हाई इतनी दूर बना है, ये देखिए अबव द जोन बना है ना, जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो अबव द जोन बना है तो चांसेस ज्यादा है ना, राइट। तो अगर वो लोअर हाई यहां बन जाता तो फिर वो डाइवर्जेंस बन के, हाँ, तो क्योंकि ये लोअर हाई डाइवर्जेंस बिल्कुल देख कितनी स्पीड से गई है जी। लेकिन ये लोअर से लोअर हाई बनाया, नहीं हायर लो से बना है। 30-20 में देखें, पीछे 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 पिछला जाए, ऊपर देख रहा हूं, ये देखिए, हायर हाई हायर लो, ठीक है। पहला लोअर हाई मेरी क्या चीज दे गई कि अब यहां से इसके, यस, या ये मेरा क्यू था कि यहां से अब नीचे मैं ब्लैक कैंडल ले सकता हूं। ये मैंने ली है, तो इसमें मैं सिर्फ 2 टिक से मुझे 10 पॉइंट मिल रहे थे, वो नहीं हिट किया, लेकिन मैंने 4 पॉइंट इसमें फिर भी, ओह ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रॉफिट में लिए हैं। ओह लेकिन ठीक, मेरे अगर 2 टिक होते ना, और हाँ, तो मेरा 10 पॉइंट कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, गुड कराई। तो ये सेटअप आपको दिख जाए ना, ये मेरे ख्याल से तीसरा सेटअप आया आज ये सेट। तो हम वो क्या कर सकते हैं, जो करीब वाले हैं वो छोड़ दो, क्योंकि वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज इट वाज सो फार, इट वेंट अप, so we can take that lower high. I took that. So the moment you see in ES this setup, my eyes light up. I'm like, oh my God, I can take even this mid band, and I can probably even take this mid band. कहाँ आ गई प्राइस दोबारा? S2 में, S1 में आ गई। So don't miss this setups at all, please. This is like the ultimate setup, और जब से
आपके साथ में ट्रेड कर रहा हूँ, वैसे आपने बताया नहीं, सेटअप लेके बताया कि नहीं आप नहीं आप कह दिया करे जी सर वो लोअर हाई आ रहा है लोअर तुसी ले आए ट्रेड हाँ नहीं एल लिया ना फिर एल लिया लेकिन ए मिस हो गया क्योंकि ये यार ये देखें 18 पॉइंट है कुछ नहीं आया मुझे अगर यहाँ ये मुझे एटलीस्ट 9-8 पॉइंट दे जाते वेरी गुड नहीं आप अच्छा सर मैं अभी आपको इसके पीए के बाद दोबारा कर देता हूँ मेरा कल का ट्रिनिटी का लेक्चर इसी पे सारे का सारा लोअर हाई हायर हाई किसे आ जाएगा कल यूट्यूब ओके एनी क्वेश्चंस हियर इसमें हाँ जी आप तो आपको वो फिर आपको एक ऑप्शन देंगे कि डू यू वांट टू विथड्रॉ $1,500 और डू यू वांट टू ग्रो योर अकाउंट इट्स सो यू से हे आई वांट टू टेक माय मनी आउट नो प्रॉब्लम So we can withdraw 1,500. correct If we did 28,000 then you can build your account so this is what I did by the way what I did was I started my account at 25,000 I took it to 28,300 I made $3,310 to be exact this is what I made right I withdrew 1,500 okay left with what now I build it up again I just have to make another 2,000 and then I can withdraw another 1,500 so if I will trade for another 10 days I think 2 more days are left that's it and then I will get to my so if you took out from 27 1,500 you only have $500 available in the account so you can build it again but it's difficult from going from 500 to 2,500 but you can take out only $500 you can say all right give me my initial investment I give you 50 and I give you some money so you don't have to take out this money at all you can build it to a certain point maybe 28,000 29,000 then you can so initially they have given you 1,500 once you give them back their money you can your account is now in the state of either withdrawal or 1,500 withdraw करते हैं तो उसमें 500 500 रह जाएंगे बिल्कुल उससे फिर हमें आगे अगर जाना है अगर आपने 1,500 ना निकाले 1,000 निकाल लें 1,000 नहीं निकालें 500 निकाल लें कुछ तो निकालें ना ताकि आपका ना why do I call it it's called the circle of trading आपने पैसे भेजे उनको पैसे मिले आपने फिर पैसे भेजे उनको पैसे मिले आपने पैसे कमाए फिर आपको पैसे वापस आए एक पूरा सर्कल हो जाए इनवाइट आती है प्लेन से पावर बटरनी लिखना होता है कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट आता है तो आपको पूरा सर्कल आपका एक दफा सेट हो जाए ना फिर पेमेंट प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है ऑल आई हैव टू डू हिट अप्लाई पैसे आ जाते हैं शाम तक स्पेशली टेक प्रॉफिट में तो लाइक मुझे फास्टेस्ट पैसे आए 39 मिनट्स में तो सर ये जो मनी है ये हमारे अकाउंट में आपके रियल अकाउंट रियल एक्चुअल कैश है डिफरेंट अकाउंट होता है नहीं रियल अकाउंट तो the way it works is so let's write down funded companies the money flow right so they pay to a different platform so they hire you as a contractor so your agreement is you're their contractor so HR companies a company called Plain there's a company called Rise these are the two companies used by most funded companies, Plain or Rise. There's another company called DEEL, but nobody uses that anymore. So once you have money coming in, so you can take this into, now you have US dollars coming in from them. And then you can take into a bank account called Wise. It's free bank account. And or your TD or RBC or Scotia, wherever. So when the money hits back, then it comes back through. It's pretty. You don't have to physically visit anything. So लेकिन जिस दिन पहला आपका सर्टिफिकेट आएगा वो एक माइलस्टोन होगा कि मैंने एक चैलेंज कंप्लीट कर लिया
उन्होंने कल पीए पास किया शुरू एक दिन में, गोल्ड में करती हैं एक दिन में कर दिया। सो पीए को मैं सॉरी ईए में अनाउंस करूंगा, अभी भी पीए नहीं अनाउंस करूंगा, सॉरी। तो ये एक दिन में उन्होंने गोल्ड में पास कर लिया, क्योंकि एपेक्स इज एन कंपनी दैट अलाउज यू टू पास दिस इन वन डे, बट इट्स अ डिफिकल्ट कंपनी टू वर्क विद बिकॉज इट्स कॉल्ड द लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड। वो एक एक्सपीरियंस नहीं खुद के नहीं लगाने, मीनिंग उसमें एक रूल एडिशनल है। उसमें ये आपने एक ट्रेड डाला, लेट्स से 6000 से लॉन्ग किया, प्राइस चली गई 6005 पे, ये $250 का प्रॉफिट है ना, राइट? लेकिन आपने यहां 250 पे क्लोज नहीं किया, ट्रेड नहीं किया ना, और प्राइस वापस आ गई 6001 पे, अभी $50 नजर आ रहा है, आपने क्लोज कर दिया, ठीक है? मैं पहले 250 देखा, फिर 50 देखा, $200 का नुकसान एपेक्स लिख लेता है। दे वॉच योर ट्रेड्स, वो उन्होंने अपना अलर्ट लगाया होता है, उसको कहते हैं लाइव ट्रेलिंग। तो वो आपका ट्रेड बाय ट्रेड लेजर करते हैं। नहीं वो कहते हैं कि इसने 200 देखा, इसने क्यों नहीं बंद किया। तो थ्रेशोल्ड कहाँ से खराब होता है, आपने देखा इन्होंने गोल्ड में 700 देख लिया, ठीक है, लेकिन वो जब बंद किया तो 200 पे बंद किया, अब उनको 500 का नुकसान हुआ है। वो लोग कहते हैं यार 200 का फायदा हुआ। एपेक्स इतनी बुरी चीज है कि लेजेंड्स में, टेक प्रॉफिट में और पर्डिया में ये नहीं है। सो दे यूज द वर्ड कॉल्ड एंड ऑफ डे। एंड ऑफ द डे वो 6 बजे पूछेंगे आपसे आपने क्या कमाया, राइट? सो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सो आई मीन इन माय पर्डिया आई वाज अप 480, देन अगेन थोड़ी सी मौत बड़ी, 500 कर लेते हैं, वो 480 से 280 पे आ गया। लेकिन वो अब एपेक्स में क्या होता, एपेक्स में वो काट लेते 180 का नुकसान। पर्डिया वाले 6 बजे देखेंगे, अच्छा यार इसने क्या किया, 280 है प्लस है, ऐड कर दो। सो दैट्स हाउ इट इज। हाँ जी, नहीं आप नहीं आप 1500 से ऊपर जितना मर्जी बनाओ, लेकिन उन्होंने 1500 पे आपको पास कर देना, आपको 1500 पे पास। सर आप 40 माइक्रो अलाउड है, माइक्रोस करें, मिनीस करें, ईएम में वो इतना स्क्रूटनी नहीं करते। सिर्फ मैं आपको इसका दिखाना था, ये आपके जो S1 से बाउंस हो गई जी दोबारा। ट्रेडर्स का अकाउंट सेम है, पासवर्ड सेम है। कितना पड़ेगा? Quickly giving you guys this setup that we had. Okay, so how many mid bands? This is 1510. Let's ठीक है, वो 2. Okay, if you just take the ES and watch this setup, I honestly will suggest everybody to do it this way. Take a 30-20 ES chart, duplicate it. So what you do is you duplicate this chart, duplicate the chart. So I duplicated it. So I went right click on ES and I right clicked and I said duplicate into the new tab. Okay. Then we can remove some indicators to make only your eyes should be looking at. So I took a brand new chart and I duplicated it, right?
So take a look, where am I? I am removing my Bollinger Bands. I don't care about watching Bollinger Bands, okay? I don't care about watching my magic bands. I removed it, okay? I want to just clean it. So I didn't touch the original, remember? So I cleaned it. Second, I'm not even caring about my trigger lines, right? Just to, if you like, you can keep it depending on if you want to watch more. As you see, now I have removed literally everything. I will even remove these highs and lows for the day. Okay. Okay, take care. Okay. Now my chart looks clean, just like the videos that you're watching. I've removed literally, let me see if I can remove more indicators to make it cleaner for you. And you can do this on Nasdaq too. I have Mansoor testing this in Nasdaq, and he says, beautiful. Swing, retrace, no extension, sell from a black candle. So, Nasdaq में कर रहा है वो 30-20 में and 60-40 के chart में. Okay, so value area I don't care. Let's do even time range I don't care. So I'm just making it easier on my eyes. So what is my eyes saw? Higher high, higher low. All right. So that means my price is going up. This first lower high was my indication that my price is going to go down, right? So I saw this. I will place my sell stop order right here at the black candle. And look how beautiful it went down, which it took 10. Retrace, extension. Swing, retrace, no extension. This did not break 5907, so .5, so there is no extension. So no extension means this becomes my swing. Now, now let's change it again. Retrace, extension. We have a swing. Now this became the swing. Swing, retrace, extension. Wait, there's no extension right now because I don't have a lower low yet. Wait. So swing, retrace, extension is done. Now this becomes my swing. So the first clue is higher high, higher low. Oh my God, I see a first higher high, lower high. That's my chances, so today's third setup. Fourth setup maybe, but third to be exact. Now I'm going back. All of this is gone to this new setup. If this is my swing, right? So retrace will come around here, and extension, no extension to the downside. If there is an extension, that means my trend is continuing. If there's no extension, that means I'm about to change my shift to the other side. Here, no swing, retrace, extension, no extension, trend to the downside. Swing, extension, trend is continuing. So now this is my swing. My brain only watches last three. Am I in the swing? Am I in the retrace? Am I in the extension? The moment your brain says, and these numbers then help me tremendously to figure out swing, retrace, extension, swing, retrace. This game, I have people who play, and they said, man, why are you telling this to a lot of people? Honestly, I got 2 hate mail yesterday because they're trading this on a daily chart. Now let's see, let me show you what I meant by daily chart. And you were gonna say, my God, this theory works there too. Look, swing, retrace, swing, retrace, extension. There's extension, yes? Okay. Then you have coming down from it made another retrace. Is extension? No. So they saw a lower high, and then they shorted after the black candle. Look how many points they got. 220 points. यहाँ पर आ जाती है, यहाँ एक छोटा सा एरो, जनरली यहाँ ब्लैक कैंडल आ जाती है. ये हर लोअर हाई, हायर लो पे एक ब्लैक कैंडल आ जाती है.
So they saw this lower high approximately in January 24th. They're like, man, price is going to go down. It didn't make a higher high. Every chart, whether you do 1510, even go into 403, 805, 1510, 3020, daily chart, swing, retrace, extension. Extension becomes swing. Swing, retrace, extension. No extension. This becomes swing. So the moment they saw a lower high around January 24, everybody was short. Because they said on a daily chart, it didn't make. So these are the users who are trading FTMOs on a long term. So they will exit at the next higher lows. So higher lows. But look at this. It didn't make a, so even going down, it didn't make a lower low, right? It becomes Another trade to enter, right? So everybody right now is waiting. So they will not buy for a until they see a trend change. So when the daily will put a higher low. So this is the situation right now, by the way. Back in August, 52.1, right? Look at it right now, what is happening. It has made a lower low, right? So after a lower low, if it makes a higher low, that's your cue to go up. वही चीज हम करेंगे ना. तो ये अगेन बड़े पैमाने वाले होते हैं जो साल में 3 ट्रेड डाल रहे हैं. ये whenever, for example, I'm taking that one. Every day it will come, it will make higher low. Every day. No. But this is done over August, Yeah, after that. August, September, October, December, January. So February 3 times, right? So this is not a daily trade. You're not going in for, this is not scalping. People are going in for a long-term trading. Is the market momentum down or up, right? So the moment they will see a first higher low, at the moment, all of us are going to watch where does it make the first higher low. That's where FTMO I will go long for a long time. Like at least like 500 points on their minimum. I'm just waiting because I want to see how far it can go down. Maybe it can continue to go down and down and down. So the moment I will see my first higher low is my cue to enter for long term. But this is a daily chart. Coming back to our scalping. Higher high, higher low. My first clue was a lower high. So swing, retrace, extension, retrace, extension. This is my swing now. This is retrace. Fibonacci boxes are there. Every retrace has a Fibonacci boxes, by the way. So that kind of tells you there's a fib. So swing, retrace, extension. Now, right now, we are in the retrace. So anytime if I ask you what move is this, you should be able to tell, hey, this is a swing or retrace or extension. So right now, let's go back. Swing, retrace, extension. No extension, this became the swing. Swing, retrace, give me a second. This was a retrace. I'm confused now. Right now, extension became swing, swing, retrace, extension. Yes, there is extension. So swing, we are in retrace. So if it makes a higher low, that's my cue to go up. So if it makes it, yes, from here 8.75, you should be able to yeah. We will put a buy order. Buy stop. Sorry? वो लेकिन हम नहीं यूज करते. हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म. वो तो अभी फिबोनाची आहिस्ता आहिस्ता ला रहे हैं. सिम, जस्ट अ सिमुलेशन. यस. मैं यही देखें, लोगों के डिस्कशन होती है ना पहले 1 से लेकर 3 आ जाए 3 बजे आइएगा, क्योंकि पहले 1 से लेके तो हाँ सेल्स का सेमिनार चलता है ना, तो 3 o'clock, क्योंकि लोगों ने फंडेड के बारे में क्वेश्चंस हैं. ये के पीए में ट्रू टेक्निकल डिटेल होती है 3 के बाद, 3 से 6 के दरमियान.
lower high minus for selling buy. ओके जी, आपका एनी टेस्ट दीजिएगा। ये सर आप जो हायर लो बन रहा है ये कोई जेन्युइन हायर लो नहीं है। बना है यहाँ पर हायर लो, ये kind of messed up सही है, लेकिन फिर भी हायर लो तो बन गया और ब्लैक कैंडल से वो देगी आपको पैसे। हायर लो बना ब्लैक कैंडल हायर लो में तो अभी नहीं करना है इसको ना ऐड। नहीं, एक सेकंड हायर लो में तो ये हमने हाँ लेकिन करके तो हमें फाइन हाँ तो मैं 5-8 हायर लो तो लिखा आ गया ना, आ गया। अच्छा तो ये अब आपका 5863 प्लस 4.8.75 इससे हाँ वहां से आपका बाय बनेगा। नहीं 30-20 पे $558 558 237 हाँ जी 246 5872 ठीक है जी। क्या हो रहा है जी न्यूज़ में? somebody said watch the news। वो बोल रहा होगा, ट्रम्प बोल रहा होगा, ट्रम्प tells it he has to be thankful। कौन सा आपका प्रिया ये अकाउंट साइन अप कर दें। अब देखिए ना 5861 प्लस इंफॉर्मेशन डालनी है ना इसमें। हाँ जी MES में मुझे आया नहीं। हाँ हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ ना उसमें फिर आप खुद डाल देते हैं बहुत जबरदस्त है ना। हाँ वो हमने कौन सा हेलो मैं ये 5 हाँ नो प्रॉब्लम। मैं पहले रैप अप कर लूँ, आप प्लीज। Zelensky and Trump clash in British Oval Office talks. तो मार्केट गिर रही है फिर। सर ਜਦੋਂ ਮਿਡਬੈਂਡ ਦੇ हाँ लेकिन 30-20 अच्छा 15-10 मैं फिबोनाची इधर देखता नहीं, मैंने ज्यादा उधर फिबोनाची हाँ फिर ठीक है। अगर दोनों हायर हाई लोअर लोस चल रहे हैं ना मोस्टली मिड बैंड ठीक चल जाएंगे। मुंदे अंदर बंद है नहीं पिक योर पासवर्ड अगेन। अभी तो ये रिट्रेस चल रही है जी,
हाँ रिट्रेस है, अभी तो हायर लो 59.6 रिट्रेसमेंट लाएगा मेकबैक के काट के रहेगा जब रांची बॉक्स मेकबैक के बीच काट के ना तो 100% कम रहेगा मेकबैक। अपनी ईमेल चेक करें। इसे क्विकली दसना, मेरे को 2 मिनट ने मैं निकल रहे हैं। अपनी ईमेल कंफर्म करें क्विकली। I'm gonna shut off the Zoom right now because I gotta go. अभी वो ट्रम्प की स्पीच चल रही है मेरा ख्याल है। ये लाइट सॉरी ऑन कर दीजिए। जी सर की करना है? हाँ जी चार्ट्स खराब है तो वो डैनियल करेंगे। अच्छा दो मैं अकाउंट बनाए ठीक है वो पे कर दियो ठीक है। मैं थोड़े होर कर दियो थोड़ा सी कालियां फिर आवा किस दिन मैं हाँ केड़ा इपेक्स था या लेजेंड था? Apex था जी। ठीक है। हाँ जी अभी तक फाइल हो रहा है, अभी तक फाइल हो रहा है, फाइल हो रहा है। पे तो 2 मिनट हो जाएंगे। इधर लॉगिन करना मैं तो दसदा लेजेंड दे एपेक्स के अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ लॉगिन करो। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ है ਇੱਕ ਲੋਗਿਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ नहीं नहीं ਮੈਨੂੰ पता नहीं ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਇਆ है यू है वो कह रहा पासवर्ड ठीक नहीं है तो लॉगिन करो में आना है हम तो बैठो में आना है। यू कंफर्म दैट ओके। किधर ले आए हम इनकी को भी नीचे ले आए। ये फॉर्म भरते हैं विक्रम भाई। कल क्लास 3 है 4 है 3 नहीं अपना ना कोई कंपनी 3 है कोई कंपनी कोई वो पर्सनल कंपनी पूछ रहे हैं आपकी। ये अगर कुछ लोग कॉर्पोरेट अकाउंट खोलते हैं ना ऊपर टैक्स के पेपर पर उसी के पूछेंगे। कुछ भी ना लिखे खाली छोड़ दें।
जैसे लगाया हुआ है मैंने बाएं। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी आपके साथ ही बैठा हूँ। अच्छा ठीक है 58 68 पे हाँ जी जी मैं 2 बाई करके मैंने एक ही बार बाई स्टॉप लिमिट 1 पे बैठा हूँ। मैं 68.25 पे हूँ। क्या हुआ? और नहीं पिक करके गया। अच्छा 1 सेकेंड, अभी मुझे चलो पिक हो गया। उसने ट्रेड में डाला और चला। इस मीन के अभी उस साइड से अच्छा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके मैं क्या पता नहीं क्या हो गया। दोबारा S2 पे ले गया, इसका मतलब है कि वो बोल रहा है ट्रम्प कुछ ना। First Friday, third Friday is always good. हाँ जी लेकिन वो माइक्रो माइक्रो था। मैंने एक माइक्रो मैंने कौन सा यहाँ नहीं मैंने नीचे आपको देखा ना S2 पे गया, मैंने एक माइक्रो और लॉन्ग करके एवरेज करके 2 माइक्रो कर दिया तो -50 था। ऑलराइट सी यू गाइस। हाँ जी हाँ जी